Hello. Welcome back to Almighty Blues FC, a fan channel for all to see. Or I hope all literally are in the house because it is the World Cup finalists, the two World Cup finalists जो थे just about what 3.5 years ago, और फिर से आज देखने को मिल रहा है. बहुत अच्छा होगा मैच, और I'm hoping that as time passes by we have more people watching. And yes, big up to Aditya Gupta जो है. Benzema, Mbappe masterclass, or will France's defense be subpar again? Well, honestly, Mbappe is not available. हाँ, वो injured थे. I think हम देखे थे. I think he was substituted at half time. It was against Denmark, if I remember right. Definitely, तो Mbappe तो नहीं खेलने वाले. But we will look at the lineups, of course. I'm hoping जो भी देख रहा है आदित्य और जो भी और है, let's like the stream so that automatically rest of YouTube जनता को remind कराए कि यार हम भी लाइव है और आए देखिए और put in your predictions. Aditya, what is your predictions? Let me know, and everyone watching, let me know what are your predictions. It is of course France against Croatia. It is in Croatia. It is in split. So interesting रहेगा क्या होने वाला है absolutely. लेकिन यार मैं तो honestly मैं बोलूँ तो यार I am hoping that we get to see Benzema, although there are doubts that Benzema is there. So let's actually take a look at the lineups for sure. यहाँ पर lineups देख लेते quickly. चलो मैं तो open कर रहा हूँ lineups. चलो as expected नहीं है. Benzema is not starting. Mbappe तो definitely we were expecting, right? लेकिन हाँ, this is what we are seeing now. By the way यार ये highlights कौन से गेम के आ रहे हैं, मतलब क्या मस्त highlights आ रहे हैं. But let me share the lineup. ये रहा lineup और अभी आपके prediction दे दीजिए. Because yes, Benjamin Pavard जो नहीं खेल रहे थे last game में, और last game में याद है they went 3 the back against Denmark. It did not work. They lost, remember, obviously. 1-2 हारा था, लेकिन I think Benzema scored a great goal उसमें, and he's not there. Saliba, who made that mistake, मेरे ख्याल से Saliba, हाँ, he had a very good season, लेकिन भाई that goal was down to Saliba almost. The second goal, Cornelius जो goal किए थे, absolutely. Kimpembe is the captain. क्या young squad है भाई आज. Kimpembe is the captain, imagine. Rabiot, Dinia, हाँ, मैं expect कर रहा था काफी changes. Chouameni, he gets another start. Very good to see that. Kante is rested as well, and Genduzi comes in. Diaby, इतने highly rated है, and let's see how he does with Nkunku in the hole. Interesting part that. लेकिन यार Croatia strong है, so आज maybe Croatia gets the better of France. So looking at the lineup, हाँ, bench obviously France की ज़्यादा strong है, no two ways about it. लेकिन looking at this lineup, again, Barisic, Rangers के अच्छे left back है. Vida, मतलब the Croatian centre half, always ever present मैं बोलता हूँ. Of course, interesting, Vrasko is not there again today, right back when he wasn't 100% fit. Brozovic is there again. Now that's interesting. Like he wasn't 100% fit. जहाँ तक मुझे याद है, फिर भी उन्होंने खेला था. तो I am kind of surprised with this, absolutely. लेकिन हाँ, Kovacic is back. Modric is back, and of course, we have a two-man up front. लेकिन हाँ, bench देख लेते quickly before coming onto the bench. Let me actually take a few comments. अगर आप लोग आ गए तो yes, आ गए. Chalo, nice to see everyone here. Hello Ankit dear, hello RCS as well. Sorry, France B team looks like some nations team. Well, let me be honest. It is the main team of basically France at this point in time. क्योंकि यार, let's be honest, जो first team है, they are really fatigued. So this is what it is, Pratham. Mbappe को curse लगा Madridistas का, okay, and भाई, that is fine. Thank you. Very good to hear that. Doing well, and of course, man, always Syed, that is always there. France 2, Croatia 1. चलो यहाँ पर मैं बोलता हूँ आज सरप्राइज रिजल्ट होने वाला है फिर से. It'll be a draw, yes, but a high scoring draw. I am looking at 2-2 क्योंकि यार काफी इनएक्सपीरियंस है दोनों ही साइड में. तो 2-2 बढ़िया गेम. लास्ट मैच जैसे हुआ था स्पेन का जो गेम हुआ था अगेंस्ट चेक रिपब्लिक, यहाँ में मक्खी घुस गई क्या? Funny. Anyway, according to me, it's going to be a boring 2-2. अरे boring 2-2 draw नहीं, interesting 2-2 draw हो जाए. So let's have a lot of substitutions as well. लेकिन हाँ, first half में mistakes होंगे is what I'm guessing. 1-1 शायद बोलो. Interesting. Jesus to Madrid पे what's your opinion? भाई मतलब he's not a typical right winger. अगर आपको चाहिए एक forward line जो है ना is basically able to score goals, he's definitely on. लेकिन he's a typical winger नहीं है. तो मेरे ख्याल से यार you have Rodrigo, you have Valverde, तो not a bad option. मतलब एक 3 different dimensions हो गए Madrid के, तो काफी अच्छे ऑप्शन होंगे. In Google, France's lineup is 3-5-2. तो क्या दिखा रहा है यार गूगल में देखते हैं. I think probably don't tell me Genduzi बोल रहे center half. मतलब surely Chouameni is not center half, right? लेकिन हाँ, interesting RCS you say that. I think France Croatia
1-1 considering France has rested many. Okay. पागल है फ्रांस का मैनेजर, स्टिल नॉट स्टार्ट विद जिरू. भाई मैं क्या ही तो बोलूं यार, उसका मतलब आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट लाइक दे डोंट वांट जीरो टू गेट द रिकॉर्ड, एज इन ब्रेक द रिकॉर्ड ऑफ ऑनरी, बिकॉज ऑनरी ऑब्वियसली अगर वो ब्रेक भी करता है भाई, ऑनरी इज ऑनरी मैन, मतलब ही विल ऑलवेज रिमेन फॉर फ्रांस इज वन ऑफ द ऑल टाइम ग्रेट्स इन टर्म्स ऑफ फॉरवर्ड लाइन फॉरवर्ड्स, बट जीरो यार हैज टू, मतलब ही डिजर्व्स इट, सिंपली पुट ही डिजर्व्स इट. मैं देख रहा हूँ यहाँ पर फ्रांस की जो स्क्वाड है ना फॉर दैट वाज सिलेक्टेड फॉर द नेशंस लीग, उसमें देखते कौन कौन ऑप्शंस थे. मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग है दैट दे डिड नॉट ऑप्ट फॉर जीरो. हाँ, ही इज नॉट इवन इन द स्क्वाड, जस्ट सो यू नो, वो स्क्वाड में ही सेलेक्ट नहीं हुए, दैट इज द प्रॉब्लम. That is why Giroud is not. Giroud was last selected for South Africa on 29th of March 2022. That was the last. उसके बाद वो स्क्वाड में ही नहीं है. और इट इज डेफिनेटली बेन येडर जो है मोनाको के स्ट्राइकर, आज जो खेल रहे, ग्रीजमैन, एम्बापे, कोमन, बेंजेमा और डियाबी, ये फॉरवर्ड लाइन है, अलॉन्ग विद एंकुकू ऑफ कोर्स इज एन ऑप्शन. तो ये सब इतने सारे फॉरवर्ड ऑप्शंस है भाई. आई कैन स्टिल अंडरस्टैंड रोटेशन एंड ऑल दैट, लेकिन जीरो probably Nations League में would have deserved a chance. मतलब पता है वर्ल्ड कप ही may not start anyway. भाई मैं तो ठीक हूँ एक्सट्रीम. आई होप एवरीवन इज गुड. और बाय द वे लेट्स लाइक द स्ट्रीम सो दैट ऑटोमेटिकली पीपल आर रिमाइंडेड कि यार हमें भी लाइव स्ट्रीम करना है और साथ में जुड़ना है. लेकिन हाँ, इट्स गोइंग टू स्टार्ट इन अबाउट 8 मिनट्स. मैंने लाइनअप दिखाया, हाँ काफी कम लोग थे तो मैंने वापस दिखाना है लाइनअप. गिव मी 2 मिनट्स. Benzema will smash Croatia's net. Okay, Benzema is not in the starting 11 unfortunately. But of course, Benzema is on the bench. So is Griezmann. Kunal Yadav on all when he comes on. Okay, fair enough, fair enough. Nicola, big up to you by the way. Now it's 433 in Google too. Google ने हमारा stream देखकर change कर दिया भाई. Arceus, let's be honest about it. How many goals is Giroud away from Henry's record? I think it's just a handful. मतलब again, highest number of goals from France देखते हैं. मतलब I'm not a statistician to know everything, but let me check if he is just. I think it's just a handful of it. जहाँ तक मुझे याद है भाई साहब, खाली 3 goals अवे, 3 goals away he is equal. Imagine, मतलब he deserves it man. ये नेशंस लीग में क्या ही तो जाता है यार अगर सिलेक्ट करता तो. I don't know, maybe he himself did not want to be, I don't know. वरान इतने खराब सीजन के बाद फर्स्ट टीम कैसा खेलता है फ्रांस के लिए. ऑनेस्टली वरान इज नॉट 100% फिट, इसलिए वो आज नहीं है. ऋषिकेश, वो लास्ट मैच में वो भी इंजर्ड थे इफ आई रिमेंबर राइट, अलोंग विद एम्बापे. Rahat Ahmed in the house. Justin Christopher Gaultier wants PSG an agreement with Nice wouldn't be hard to find if he's chosen. There are only 2 candidates for job now, Gaultier and unfiltered name. Well, interesting. यार ये कहाँ से नाम आ रहे हैं, मतलब इतना इंटरेस्टिंग, मतलब स्टोरी सडन से आ रहे हैं ना फॉर PSG all of a sudden. I think Christopher Gaultier is the head coach of Nice, right? If I'm not wrong, and he was a player as well previously. Correct me if I'm wrong, Rahat. Giroud won't play anyway, just doesn't provide dynamism. They have Benzema, Kylian, Nkunku. नहीं, actually Adway, on the other hand, जो सिस्टम खेल रहा था ना पिछले मैच में, I felt that Giroud was missed. A kind of Giroud was missed because they were not able to keep the ball enough. मतलब वही है. और Giroud kind of helps there compared to maybe other strikers. That is his plus point. Okay, he gets others into play more and he holds up the ball. और वो सब फ्रांस के लिए अच्छा करते हैं. वेल स्प्लिट में है आज मैच, तो बढ़िया मतलब क्रोएशियन कलर्स देखने को मिलेंगे. लेकिन अगेन Croatia nowadays are compact kings. Mark my word, if they keep position, I will say Croatia will end up 2-1 with late winner from Croatia. Interesting भाई, लेकिन वही है Croatia के forward line, पर आप reliable कर रहे हो. I'm not too sure about that. I know France की भी forward line काफी young है, but they have better players off the bench. That's the difference. Plus the fact that Croatia बहुत ही शर्मनाक हार के साथ आई है यार. मतलब 3-0 against Austria at home, very bad one. Hello Aditya, कैसे हो? I hope all the good. Yes, smash the likes as Adway says. Early reports that PSG are planning to test the waters for end midfielder Lovro Majer. Okay, interesting. Thanks for the information, Rahat. Big up to Talk MU, bro. How have you been today? I fancy Croatia tonight to do a number, bro. Well, again, France get a shock then second time around. I don't see it's happening. Maybe at best a draw is what I would say. But what is happening in the group? I will also take a look at the group because that's the interesting bit. It's not just one match. There are 2 games happening tonight as well. और ये नेशंस लीग इज काइंड ऑफ गेटिंग अस मैचेस लेफ्ट राइट सेंटर वापस से काफी काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग कर रहा है सिचुएशन, स्पेशली विद दैट फर्स्ट राउंड ऑफ शॉक्स. तो यहाँ आप देखिए, एज यू कैन सी इट्स ग्रुप 1 ऑफ लीग ए. ठीक है, लीग अ नहीं है, लीग ए है यहाँ. लेकिन ऑस्ट्रिया ऑन टॉप, ऑब्वियसली बीटिंग क्रोएशिया 3-0. डेनमार्क सेकंड, बीटिंग फ्रांस 2-1, और फ्रांस थर्ड फोर्थ. सो इफ इन केस
France beats Croatia today, say maybe by a greater margin of one or more, and Denmark loses to Austria. I think Austria will remain top, France will become second. Or of course, the fourth position, कोई भी team नहीं आने चाहिए. Yeah, because too early. It's just the first match, second match day of the Nations League 2022-23. But let's see. Again, put in your comments who's going to top the group, who's going to bottom this group A. Let me know, group A1 that is. And meanwhile, I'll take in a few more comments. Modric poster. Yeah, yesterday was a goat day in football. Both the goats showed their class. Three goats. You forgot Gareth Bale. Let's be honest. He is a goat. At least for British football, Gareth Bale has to be a goat. Come on. He has represented British football for over the years. I think easily over the last decade, I think he's the best British footballer. And I'm calling it. Yes, he is better than a lot of English players in the last 10 years. I believe so. But definitely, what he's achieved after 64 years. Wow. Wales. France needs a little, but of course, Ronaldo and Messi are hats off unko. France needs a little striker like Lukaku in Mbappe absence. नहीं भाई कोई नहीं. जॉन टेरी पीएसजी के मैनेज बन गए तो इकार्डी टेंशन में हो गया. लेटेस्ट डेम्बेले न्यूज हम आएंगे उस पर डेफिनेटली. ट्रांसफर न्यूज काफी सारे बातें करने हैं while the game goes on. मतलब अभी तो यार गेम के बारे में थोड़ा क्योंकि टैक्टिकल पर्सपेक्टिव. आई वुड लाइक टू नो योर प्रेडिक्शंस एवरीवन. गेट इन योर प्रेडिक्शंस. कौन गोल स्कोर करेगा? लेट मी नो. व्हाट डू यू थिंक अबाउट पॉगबा टू यूए? Well, ये भी मैं स्टार कर रहा हूँ. I'll come back to that, but there are high chances from what it seems like. Bhai, if Ozil wants to come back to EPL like Eriksen, which EPL team do you think should approach through his agent? मेरे को नहीं लगता यार. Ozil will not come back to EPL. Let's be honest. He might come to England, maybe a year or two down the line, maybe, but championship. हाँ, मुझे नहीं लग रहा अभी यार he'll come back and pay to the Premier League something that prime Ozil is gone. आप कितना भी चाहो नहीं आने वाले. That's my opinion. Even with the relegation team, it's even worse because वो इतना work rate नहीं रखते. That's his main problem. Ankit, is it true that Icardi has more stepsons? क्या यार मतलब इतने सारे पद आज. एनीवे, वर्ल्ड कप कर्स इज रियल. आई एम नॉट कीपिंग फ्रांस as favorites in World Cup. Okay, I think France will get out early. Interesting. Yes, people do take that poll by the way. Or again, put in your comment who's going to top this particular group A1. For me, मेरे लिए मैं बोला था फ्रांस होगी वापस. हाँ, despite आज draw, I am calling it. They'll get the last 4 wins. Let's put it that way. Giroud's target man can't press well. Benzema does it way better, difficult for him to make World Cup squad. Exactly. मतलब again, अगर 4-3-3 खेल रहे हैं, fair enough. 4-2-3-1 खेल रहे हैं, fair enough. लेकिन अगर 3-4-3 खेल रहे हैं, I think Giroud को ज़्यादा आदत है उस particular formation में खेलना. 3-5-2 or 3-4-3. That's what I'm saying. Croatia and France will end the table as top 2. Interesting. Croatia, I doubt it. मुझे लगता है फ्रांस फर्स्ट होगी. सेकंड आई एम कॉलिंग इट डेनमार्क. डेनमार्क होना चाहिए सेकंड. आई एम रियली कॉलिंग इट डेनमार्क. और अगेन आज ऑस्ट्रिया और डेनमार्क भी है तो वील कीप एन आई ऑन दैट बाय द वे. उसके लिए भी प्रेडिक्शन डाल दो. क्या लगता है? Okay, very nice. Very good news coming in from Rahat. Great. Let me actually start this as well and come back to the transfer news later on. Choose best British footballer: George Best, Dennis Law, Rooney, Bale. Wow. This is a tough one. अभी again I am starting this मानव भाई. लेकिन हाँ यार again मैंने देखा नहीं यार इतना जॉर्ज बेस्ट और डेनिस लॉ को. लेकिन रोनी बेल को देखा है. मतलब इन द प्राइम आई वुड स्टिल से Rooney kind of does a lot. मतलब as a team, as a manager, I would pick Rooney any day. लेकिन again, as a person playing FIFA, as a person who wants basically your clutch players to come up in particular games, Bale has to be the answer. George Best, Dennis Law, I'm guessing that they are far better. Like George Best especially, I've heard he was one of the most talented footballers ever in that region, right? Absolutely. Dembele is still in final stages. No further news today. As we're saying, okay, France to score an own goal and late goal by France to equalize it. Pratham, nice one. Icardi, निकल भाई बहुत हो गया. उससे अच्छा हमारा academy boy. Interesting. I feel German coaches can handle PSG very well. Thomas Tuchel, for example. वहां पर भी उनकी लड़ाई हो गई थी. Football click, so you never know. Where do you see Pochettino going and sacking is imminent now? Exactly. He has to come either to England or go to Argentina. I'm actually calling that. Maybe you never know. मतलब वर्ल्ड कप के बाद अगर अर्जेंटीना they don't do too well, maybe स्कलोनी को एक्सटेंड नहीं करे and they might get Pochettino. लेकिन हाँ, I am looking at Poch being coming to England. England यार imminent है भाई. Let's be honest. हाँ, हो सकता है एस्पेनियोल वापस. Who knows? If Icardi bashing is going on, I will add always wondered why his marriages don't work provided he never finishes. I don't know why best teams with great coaches are struggling. Spain, Germany, Belgium. I think it's not just about the coaches, Arceus. It's also about a lot of player, fatigue.
lot of player enthusiasm playing for the national team, those kind of things. जो थोड़ा edgy है, I know subject, but that's a reality of it. और यार, I hope everyone here has liked the stream. Again, I'm saying like मैं ट्विटर पे शेयर किया हूँ, so if you guys can retweet the tweet which has a link, fantastic. अगर आप लाइक भी करते हो on Instagram or on my community page, that will be brilliant so that people are notified. लेकिन हाँ, that's something that I am really looking forward to because it's a great match. ज्यादा लोग आते हैं, ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादा इंटरेक्शन होता है. मे बी वी कैन पिक समथिंग लाइक अ कंबाइंड 11 of France Croatia of 2018 and आज का team. I don't know, I'm just putting it out there. Baki it's up to you guys as always. Bhai, mark my words, France will be the first team who will go out of World Cup disappointing like Germany did in 2018. Okay, I am marking that absolutely. Because of Nations League players will be tired for the next season, I hope so. Here I think थोड़ा सा मतलब आई डिसएग्री देयर. हाँ, मतलब देयर विल बी एक है कि यार एक प्रॉपर वेकेशन नहीं मिला उनको, बीच जाने को नहीं मिला, ऑल दोस थिंग्स. बट कम ऑन यार, इट्स गेटिंग ओवर ऑन 14th. आई थिंक इट्स ओवर प्लेड. 2 हफ्ते है, ठीक है. 14th को खत्म हो रहा है. ऐसा भी नहीं कि हर एक प्लेयर हर एक गेम खेल रहा है. हाँ, उसके लिए नेशंस लीग का थोड़ा क्वालिटी थोड़ा कम हो रहा है, बट ऐसा नहीं कि हर एक आज देख लो भाई, मॉड्रिच लास्ट गेम शुरू नहीं किए थे, आज खेल रहे. कोवाचिच लास्ट गेम आई थिंक शुरू नहीं किए थे, आज खेल रहे. बेंजेमा लास्ट गेम शुरू किए थे, आज नहीं खेल रहे. सेम विद एम्बापे. तो देयर आर लॉट ऑफ इफ्स एंड बट्स. लेकिन मुझे लगता है आफ्टर 14th of June डायरेक्टली यू सी देम इन अगस्त. हाँ, प्री सीजन में मे बी दे विल कम लेट. वो एक थोड़ा सा प्रॉब्लम होने वाला है. एब्सोल्युटली इट इज मैटरिंग एज वेल. श्रेय पटेल, हाउ श्रेय, हाउ आर यू भाई? मतलब अगेन पुट इन योर कमेंट्स, क्या लगता है भाई, मतलब क्या लग रहा है नेशंस लीग कौन जीतने वाली है? थिंग्स स्टैंड, which team will top group A1 among France, Denmark, Croatia and Austria, or who's going to win the World Cup, going by the form and the fitness of a lot of players. George Best hands on, exactly. Talk MU, like I've always heard, but again, because I've not watched George Best, that is why, and I mean I've not watched George Best playing live, and that is why मैंने pick नहीं किया, and I've kind of did not count him, but absolutely, like from what I've heard, he has to be the best. भैया कल सबसे टफ सब्जेक्ट का पेपर है, बहुत कम तैयारी है, प्लीज गुड लक विश कर दो. अरे ओम, विश यू ऑल द बेस्ट यार. जितना भी तैयारी अच्छे से करो, मैं तो बोलता हूँ वो पक्के कर दो नंबर. और बाकी यार अगेन डू अ लिटिल बिट ऑफ रीडिंग इफ पॉसिबल एंड गो. एटलीस्ट कुछ तो याद रहेगा. कौन सा पेपर है यार, आप हमसे भी शेयर करिए. लेकिन क्लॉप सेलिब्रेटिंग मानेस गोल जिडान, दैट्स वेयर बेल कम्स इन. ओह भाई साहब, बाय द वे मैच शुरू हो गया यहाँ पर. ऑलरेडी क्रोएशिया प्लेइंग डेंजरसली, बहुत ही आई थिंक काइंड ऑफ अट्रैक्टिंग फ्रांस फॉरवर्ड्स. फ्रांस प्रेस करते हुए बढ़िया. आई डोंट नो व्हाई यार क्रोएशिया इतना डेंजरस गेम खेल रही है. जर्मनी वाजंट फर्स्ट आउट ऑफ वर्ल्ड कप, दे वर वन ऑफ द बेस्ट. देयर प्रॉब्लम वाज द मैनेजर, नॉट द केस सो मच विद डीडीआर. he always does better in league games. Last year's Nations League finals for example. Okay, fair enough. Didier Deschamps ज़्यादा है kind of confidence. Icardi has multiverse in his life. Absolutely, that's true. What is the main motive of hosting nations? What is the main motive of hosting Nations League? मोटिव क्या है भाई? मतलब पैसे मिलते हैं आपको, टिकट सेल करोगे तो. So basically, every team kind of hosts one match and then hosts 3 matches and plays away 3 matches. वो है ना simple fact. तो it kind of evens out ना, सबको पैसे मिलते हैं क्योंकि आपका kind of board है which is kind of selling the tickets. तो आज split में हो रहा है क्रोएशिया में. That's how it is. World Cup is in the prime season, part November. Players mostly regain match fitness by then it's going to be a banger. Yeah, fair enough. But again यार अद्वै, आप देखो मतलब there are certain clubs who are known to have a lot of injuries during that period. We, for example. Can you please can you feel the press of Croatia now, Ankit? कोई नहीं. I think I don't know whether it's a pun, but I'm just looking at the game यहाँ पर. Quickly यार, again Croatia for you, has it been one of the most underwhelming times for Croatian football? मतलब मैं तो होप कर रहा था कि क्रोएशिया रियली गोज अप द रैंक्स आफ्टर दैट वर्ल्ड कप फाइनल, लेकिन फॉर सम रीजन दे आर नॉट. और यू कैन से जैसे बेल्जियम की गोल्डन एरा थी ना, क्रोएशिया के लिए भी वापस आ जाएगी मुझे लग रहा है. दैट्स व्हाट आई वाज होपिंग, बट अगेन मे बी बिकॉज़ क्रोएशियन क्लब फुटबॉल इज नॉट राइट अप देयर. लेट्स सी, फ्रांस प्लेइंग 4-4-2. 4-4-2 खेल रही है क्या, देखते हैं यहाँ पर. यार कौन, एंकुकू अप फ्रंट खेल रहा है क्या? तो एंकुकू या दियाबी, कौन खेल रहा है अप फ्रंट? देखते हैं अभी. चौमनी तो डेफिनेटली सिटिंग, ठीक है. चौमनी डेफिनेटली सिटिंग, तो लग रहा है ही इज द थर्ड एट द बैक. लेकिन नंबर 20 जो है
ही इज वाइट, तो दैट्स डियाबी। अच्छा, इंटरेस्टिंग। नहीं यार, 4-4-2 तो नहीं है। आई थिंक इट्स हाउ इट इज। इंकुकू काइंड ऑफ फ्री रोल है। हाँ, यू कैन से इट्स 4-4-2, बट अगेन आई डोंट सी इंकुकू इज अ प्रॉपर फॉरवर्ड। ही इज गोइंग टू बी प्लेइंग ऑफ ईयर इज व्हाट आई एम गेसिंग। अंकित भैया, बाबा का लाइव वॉच अलोंग का थंबनेल देखो एक बार। हाँ, देखा था मैंने, देखा देखा, मस्त है, मस्त है, एब्सोल्युटली। हमारा कैसे भाई, हमारा कैसे, हमारा भी बोलिए। आई नो दैट बेसिकली इट्स अ डिफरेंट जॉनर ऑफ द थंबनेल्स, बट हाँ, certainly काफी मेहनत लगती है, but हाँ, big up to Baba यार, obviously shout out to him. Nations League also helps make friendlies interesting. Yeah, I agree, I agree. अगर फ्रेंडलीज होता तो मैं शायद देखता भी नहीं, वॉच अलोंग करता भी नहीं। आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। और मे बी आई माइट हैव, बिकॉज इट्स वर्ल्ड कप ईयर, लेकिन नेशंस लीग प्लस वर्ल्ड कप ईयर मेक्स इट डबल इंटरेस्टिंग। ताउसिफ खान द हाउस, थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। होपफुली आप लाइक कर दियो स्ट्रीम को, सो दैट मोर पीपल आर नोटिफाइड। और यहाँ पर मैं एक्चुअली मैंने एक शेयर किया है लिंक ऑन ट्विटर। यस मकाइल, थैंक्स फॉर शेयरिंग ब्रो, मीन्स अ लॉट, सर्टनली मीन्स अ लॉट। लेकिन हाँ, आई एम वॉचिंग जर्मनी ऑडिशनिंग एंड एडमायरिंग गोडरिच। लेट्स सी। ऑपरेटिंग सिस्टम्स का पेपर है, अरे भाई याद आ गया। ओएस यार, ओएस मुझे भी याद है। ओम द्विवेदी, नॉट इजी, बट अगेन यार, इतना सारा चीजें ओएस में, तो कोई नहीं, मतलब आप थोड़ा क्विक रीडिंग कर दीजिए, और होपफुली द थिंग्स यू आर प्रिपेयर्ड वेल। विश ऑल द बेस्ट ऑफ कोर्स। तो कौन सा सेमेस्टर में आप भाई, ओम आप बताइए। भाई, नेशंस लीग बनाया ही फाइनेंशियल गेन के लिए है, टू यूरोपियन नेशनल टीम्स एंड इंक्रीज स्पॉन्सर टू यूएफए, व्हिच इज व्हाई चैंपियंस लीग इज स्टिल बेस्ट लीग इन द वर्ल्ड। ओके, आई वुड नॉट बी लाइंग, मतलब अगेन हम इतना निंदा करते हैं अबाउट मनी एंड ऑल दोस थिंग्स, लाइक कम ऑन, ये कोविड था, इमेजिन इतने बड़े बड़े स्टेडियम से मेंटेन करना होता है, दे डिडंट गेट एनी मनी फॉर लाइक लास्ट 2 years। तो आई थिंक इट्स फेयर इनफ भाई, मतलब फॉर देम द बोर्ड्स टू गेट द मनी। दैट्स व्हाट आई बिलीव सो। मतलब कोविड हैज रियली बीन अ टफ टाइम यार फॉर देम। तो इट्स ओके यार। ब्रिलियंट थ्रू बॉल बाय क्रोएशिया, डेफिनेटली नॉट ऑफसाइड, लेकिन नाइस डिफेंडिंग बाय फ्रांस। बढ़िया डिफेंडिंग भाई, ये तो दैट वाज डिफरेंट लेवल डिफेंडिंग। हु वाज दैट डिफेंडर? Who was that guy? Was it Saliba? Not bad, huh? Not bad. Saliba has improved. नहीं नहीं, किम्पेम्बे था, किम्पेम्बे था, आई थिंक कैप्टन था, फ्रॉम व्हाट आई रिमेंबर, बट एनीवे, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। क्रोएशिया is not having greatest challenge pools either, still end up overachieving. पता नहीं यार अद्वैय, मतलब अगेन आप देखे थे यूरोस, तो काफी आपको याद होगा। लेट मी एक्चुअली शो यू द बेंचेस, उससे पता चलेगा कितना पानी में है क्रोएशिया का स्क्वाड। मतलब फॉर मी, आई काइंड ऑफ फील दैट बहुत सारे क्रोएशियंस है। मतलब आई रिमेंबर अगेन, maybe as a Chelsea fan, मैं थोड़ा सा I was looking forward to seeing again the guy we are linked to, that is Josko Guardiola of Leipzig। ठीक है, वो लेफ्ट सेंटर बैक में आ सकते हैं, लेफ्ट बैक में सोसा ऑफ स्टुटगार्ट वो आ सकते हैं, बैरिसिच, मतलब ये चार अच्छे प्लेयर्स हैं। मतलब अगेन आई वुड से मे बी अमंग द टॉप 50 डिफेंडर्स इन द वर्ल्ड में, यू कैन आर्ग्यू दैट Guardiola on form is there, and Sosa also on the young top 50 youngsters who are defending। लेकिन हाँ, राइट सेंटर बैक, राइट बैक नॉट ग्रेट। रास्को हैज एन ऑप्शन मे बी, बट वीडा कुड हैव कम देयर। ब्रोजोविच है, ऑफ कोर्स कोवाचिच है। व्हाट अबाउट दिस गाय यार, जो पैसेलिच जो एटलांटा पे खेलते हैं, अर्लियर चेल्सी प्लेयर थे। मॉड्रिच है, देयर इज ऑब्वियसली क्रामरिच इज एन एक्सपीरियंस स्ट्राइकर। Orsic is a guy who is underrated, I feel। Orsic is one guy that मैं बोलता हूँ भाई, मतलब he will make a move at some point for sure। Vlasic, हम देखे हैं, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग ही प्लेज फॉर वेस्ट हैम। पैसेलिच मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ब्रास्को मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो देयर आर, मतलब इट्स अ डिसेंट पूल, लेकिन हाँ, फ्रांस का अलग ही लेवल, सो वी कैन नॉट कंपेयर। आई वाज होपिंग जॉनथन क्लॉस, हु आल्सो बीन लिंक्ड टू चेल्सी, आई थिंक he would play today, but it was not the case। Let's see। यहाँ पर फ्रांस पोजीशन रखते हुए, बाय द वे, Diaby is playing wide, 4-3-3 on the ball, 4-4-2 while defending। Fair enough, Manav, fair enough। Why is Denmark Austria delayed? Okay, is it delayed? Let me check again। भाई साहब, थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो। मैं सोचा वहां पर सिर्फ स्कोर चेक कर लेंगे, बट लुक्स लाइक इट्स डिलेड, दैट्स ट्रू। लेट्स सी यूएफए की वेबसाइट में कुछ है कि नहीं। डेफिनेटली इट इज डिलेड नाउ। लेट मी सी व्हाट्स द रीजन। और बाय द वे, मीनवाइल सब लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो अगर आपने नहीं किया बाय चांस। लेकिन हाँ, यहाँ से मैं चेक कर रहा हूँ। सो लीग मैच कैंसिल, इजराइल रशिया। अरे भाई, बाय द वे, कनाडा का भी मैच कैंसिल हो गया था, इफ आई रिमेंबर राइट। ये क्या हो रहा है यार? आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, लेकिन हाँ, लुक्स लाइक, अरे मैं स्कोर में है नहीं,
ये क्या हो रहा है यार, ऑस्ट्रेलिया का मैच है ही नहीं इसमें तो, स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज। इजराइल रशिया मैच का कैंसिल ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ रशिया, दैट इज क्वाइट ऑब्वियस। लेकिन और कौन सा है यार, अरे सच में नहीं है यार, ऑस्ट्रेलिया डेनमार्क, चलो देखते, लाइनअप्स तो बाहर आ गए, लाइनअप्स आर आउट, but let me see if there's an update, let me see if there's a match info. Bhai sahab, this is something. But by the way, Croatia attacking now. Okay, France on the counter attack. नहीं, rather it was France attacking, Croatia on the counter attack. लेकिन यार मुझे न्यूज मिला नहीं अभी तक, I don't know if you guys know. I'm trying to see the official website. पता नहीं ऑफिशियल वेबसाइट क्या तो ऑफिशियल है भाई, अपडेट तो करिए आप। अपडेट्स में देख रहा हूँ, चलो अपडेट्स में भी नहीं आ रहा, लाइनअप्स बाहर आ गए, लेकिन काइंड ऑफ स्ट्रेंज मैन, आई डोंट नो, वेरी स्ट्रेंज। बाय द वे डेविड अलावा कैप्टन कर रहे हैं ऑस्ट्रिया को, ही इज कमिंग बैक, इंटरेस्टिंग। एंड अर्नाउटोविच, भाई व्हाट अ गेम ही हैड इन द फर्स्ट गेम, लेकिन ही इज नॉट प्लेइंग टुनाइट। और भाई साहब व्हाट अ नाइस क्रॉस, आई थिंक इट वाज बाय डीनिया ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, डियाबी ट्राइंग टू कीप द बॉल, लेकिन नहीं, कॉर्नर मिला। चलो Kalajdzic starting, who is a decent striker for Austria, who's been linked with Chelsea in the past. Tuchel wants him, I remember. Poulsen starting for Denmark, along with Lord Brathwaite. Lord Brathwaite is starting. Eriksen, of course. Højbjerg, of course, जिनका बहुत ही बढ़िया मैच था लास्ट गेम में, और माइले obviously the main attacking left wing back, that left back who plays like a left wing back. लेकिन इंटरेस्टिंगली क्रिस्टियनसन वापस से नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग, और मैं दिखाने वाला वो भी लाइनअप, लेकिन हाँ शुरू क्यों नहीं हुआ भाई मैच, पता नहीं। I want a rule where in cup competition, there once you win the competition, you cannot take part in the competition for at least 5 years. Oh, okay, interesting. So you don't want kind of teams repeating the win. It's kind of unfair on the fans of those teams, right? Well, I know what you mean, but again, Germany क्या खेल रहा है? अंकित भाई आपके पीछे देखो कोई बैठा है, अरे कौन बैठा है भाई, कौन बैठा है? ये तो मतलब लिटरली मुझे लग रहा था वो आहट और सीआईडी वाले दिन याद करा दिया, पता नहीं तो भाई ओएस में क्या पढ़ रहे हैं यहाँ, थियरी ऑफ कंपटीशन है क्या, ऑटोमेशन लिखना है, अरे ऑटोमेशन भाई, आई डोंट नो, आई डोंट नो इफ यू गाइस हैव फैफल, finite automation, you know, that's I kind of was one of my favorite subjects in engineering, लेकिन अभी फोर्थ सेम में कल ही लास्ट एग्जाम है, फिर सेमेस्टर खत्म हो गया। चलो नाइस, नाइस टू हियर दैट। अरे यूरी, शाउट आउट डेफिनेटली टू यू एंड ऑफ कोर्स टू एवरीवन एल्स, सब लोग लाइक कर दीजिए, डू शेयर, आई हैव शेयर अ ट्वीट एंड मकाइल ने भी शेयर किया, इफ यू कैन जस्ट रीट्वीट दैट इट विल बी फैंटास्टिक, it has the link so that everyone comes on and joins us, and of course our social media links otherwise as well on the community page of Almighty Sports Plus, that is the second channel, and of course your Instagram. Or by the way, Almighty Sports Plus में 3 के फाइनली हो गए, so thank you for that everyone. It was Kimpembe, fair enough, और मैं इतना पीछे हूँ अपने कमेंट्स में, नाइस क्रॉस, लेकिन नहीं, क्रोएशिया बढ़िया डिफेंडिंग, बढ़ गया, यू नो, फ्रांस का एक्चुअली अटैक बढ़ गया प्रॉपर्ली। कौन से चैनल में आ रहा है, अच्छा ये तो भूलना ही भूल गया आज। चलो थैंक्स क्वेश्चन के लिए संकेत, सॉरी फॉर बीइंग लेट, लेकिन सोनी 10-2 में आ रहा है फ्रांस का मैच, और दूसरे चैनल में सोनी 10-1 में आना चाहिए मेरे ख्याल से, सोनी 10-1 में आ रहा है अपना ऑस्ट्रिया डेनमार्क, और वो नहीं शुरू हुआ भाई, ये क्या आइसलैंड और अल्बानिया, क्या कैंसिल हो गया क्या वो मैच, काइंड ऑफ स्ट्रेंज। कोई नहीं, हम लोग स्कोर तो देखेंगे। अंकित, आर ऑल प्लेयर्स चूजिंग क्लब्स फॉर मनी और बैड जर्सी? 100%. Not all players, but most of them. Not 100%, 90%, 90%. I like Dutch. Wish they could play the semis of World Cup with my favorite Argentina. And if both teams win their group and round of 16, then yes, Kishore Creations. मैंने actually prediction भी दी है, जो काफी लोग अच्छा नहीं लगा था, but that's maybe just my gut. भाई अच्छी बात है तो है TOC, बस नाम का थियरी है बस। What's TOC man? Anyway, अंकित भैया, नेदरलैंड्स का डिफेंस आई थिंक बेस्ट है दिस ईयर, वैन डाइक, टिम्बर, डिलिक्ट। I'm not sure if Timber will play in the starting 11. मतलब मुझे लगता है, मतलब Defry might just come back, you know, by the time tournament हो, मतलब that's my feeling, और डिलिक्ट भी है of course, तो काफी डिफेंडर्स है भाई। क्रोएशिया का बढ़िया अटैक था, लेकिन अगेन मैन, फ्रांस का लास्ट डिच क्लियरेंस अच्छा था इस बार, मेरे ख्याल से डेफिनेटली सही बात है नहीं। वेलकम दोस्तों, लाइक करते रहो, दैट इज हार्दिक भाई इन द हाउस, चैनल को सब्सक्राइब कर देना भूलना मत। हेलो टू नितेश एज वेल, कैसे हो नितेश, और क्या लग रहा है भाई, कौन जीतेगा नेशंस लीग और वर्ल्ड कप फॉर्म के अनुसार? Many matches are cancelled as UEFA bank accounts already full, no need more. I have been busy last few days, so regular नहीं आ। अरे कोई नहीं भाई, कोई लंबा सीजन था मेरा भी, मतलब टू बी ऑनेस्ट, मतलब रेगुलर कंटेंट से अलग कुछ कर रहा हूँ, so that I just फ्रेशनिंग अप थिंग्स। लेकिन हाँ,
certainly coming later this week हम शुरू करने वाले वर्ल्ड कप टॉक्स. हाँ, मैं शुरू करने वाला था कल ही, लेकिन बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी और नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ पैनल मैं करने वाला हूँ आफ्टर मे बी टुवर्ड्स द वीकेंड. मोस्ट प्रॉब्ली थर्सडे पे शो होगा. वी विल कंफर्म दैट. Ronald Fragnick has become IAS officer after rejection. Man, you. Adwe, man, Adwe. Nitesh Meena, I mean, all celebrating the Premier League or what? Yes, Man City fan. जो है Nitesh. Need shout out with full name, please. अरे वो तो नहीं करने वाला मैं. वो तो नहीं करने वाला. No, don't worry about that. चलो. हाँ अंकित भैया. भाई बस finite automata is a very small portion of syllabus in theory of computation. Finite automata and all is easy. Yes. Easily अच्छा लगता था मुझे baby. Nations League should be cancelled because of fitness of players. I disagree, Shamin. I disagree. हाँ, जब आया था Nations League first time मैं इतना excited नहीं था. ये क्या हो गया? लेकिन I think जब नेदरलैंड्स फाइनल पहुंची ना, मुझे पता लगा यार it's a chance for a major tournament trophy. Why not? Or of course it has seedings for the Euros. और of course यार you actually build your tactics for the World Cup. और before World Cup ये 6 मैचेस काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं. Trust me on that. एक तो हो गया है. हाँ, पहला मैच maybe first 2 matches they can rest a little bit, but I think rest of the 4 matches will be really important in my opinion. Bhai, I support you, all the best. Thank you. Always helps. But it's not just supporting, also like try and interact with us. Have a lot more content going. You drive the content. People who are watching. And of course, if you have any feedback, always open to DMs, be it on Instagram or on Twitter. Yeah, my links are always below, by the way. Argentina has that belief in the squad to win. मुझे इसलिए chance लगता है उनका. Okay, fair enough. What is Louis van Gaal contribution to Netherlands? How you see him as a manager? By Kishore Creations. If you remember यार, जब 2010 वर्ल्ड कप के लिए हम खेल रहे थे, I remember इतने सारे criticism was around, right? We were so heavily criticized, as in again we had some great managers. Again, maybe if I take a look at the Netherlands squad of 2010 for example, right? 2010 वर्ल्ड कप, तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ क्या टीम थी और क्या मतलब लुई वैन गाल ने किया in terms of just the team. Absolutely. ठीक है. लेकिन इतने सारे विंडोज क्यों ओपन करके रखा हूं मैं? कोई नहीं, बंद कर देते हैं थोड़ा सा. तो आप देखो नेदरलैंड्स की जो टीम थी, चलो नेदरलैंड्स की बात ही कर लेते हैं थोड़ा बहुत. तो एक सेकंड, लेट मी जस्ट ओपन इट प्रॉपर्ली. ये पता नहीं क्या खुल गया है. नेदरलैंड्स, राइट? तो नेदरलैंड्स, ठीक है. तो 2010 में बर्ट वैन मार्विक थे, तो दैट वाज अ ग्रेट काइंड ऑफ अ टीम फॉर मी. एज इज कंपेयर 2010 एंड 2014 वर्ल्ड कप ऑफ नेदरलैंड्स द फाइनल. और आप देखो मतलब देयर इज अ रीजन हम इजीली बोलते हैं कि ही इज नेगेटिव एंड ऑल दोस थिंग्स. मतलब लॉट ऑफ, हम नहीं बोलते, बहुत लोग पीपल बोलते हैं. बट यार ये आ क्यों नहीं रहा है 2014 वाला नेदरलैंड्स का टीम? चलो आ गया. ये अच्छा, नेदरलैंड्स का स्क्वाड 2014 का निकाल रहा हूं. चलो आ गया. तो लुई वैन गाल वाज इन 2014, राइट? अभी मैं शेयर करने वाला हूं. और बाय द वे यार, आई विल कम टू द कमेंट्स एंड यस, यू कैन ऑलवेज प्रायोरिटाइज योर कमेंट बाय सुपर चैट्स अगर आप कर सकते हो अफोर्ड, अगर आपको लगता है ये वर्थ इट. लेकिन हाँ, दिस इज बेसिकली 2010 वर्ल्ड कप स्क्वाड्स. आई एम टेकिंग अ लुक एट दिस नाउ, किशोर क्रिएशंस. आई डोंट नो, बहुत ही छोटा लग रहा है आपको शायद, तो बड़ा कर देते थोड़ा सा. और बड़ा करेंगे, और बड़ा कर देते, चलो ठीक है. तो देखो आप, तो ये वाली टीम देखो 2000. अरे क्रोएशिया का मस्त काउंटर अटैक, गोल होने वाला 100%. अरे नहीं यार, ईश्वर स्क्वाड द बॉल, बैड वन. बाय द वे दे आर मिसिंग पेरिसिच. आई हैव टू से दे मिसिंग पेरिसिच बिग टाइम. लेकिन यार बुडीमीर है, बुडीमीर हाउ डू यू प्रोनाउंस दिस? ही वाज ऑन द लेफ्ट फ्लैंक, और नॉट ऑन लेफ्ट फ्लैंक, लेफ्ट फॉरवर्ड जिसे खेल रहे हैं. ही गॉट द बॉल, स्क्वायर करना चाहिए था फर्स्ट टाइम, लेकिन नहीं, ही मिस्ड इट. So look at this यार. Again, आप बोलोगे यार 2010 में the team was better than 2014 in terms of basically the gameplay, in terms of the way that you are speaking. लेकिन आप at the same time you are criticizing a lot of people यार. Under Louis van Gaal we are negative. लेकिन क्यों negative थे? मैं बोलता हूँ उसका काफी reasons है. 2010 में you didn't have strong defenders at all. आप देखो, Joris Matthijssen was okay-ish at best. Johnny Heitinga had a red card in every second.
मैं तो बोलता हूँ भाई, मार्क वैन बॉबल टुवर्ड्स द एंड थे, ठीक है, ही वाजंट इन द आइडियल मार्क वैन बॉबल वाज आइडियल अराउंड 2005 6 7 वाज हिज प्रॉब्ली पीक टाइम, राइट? Dirk out again towards the end थे, he was basically playing more like a right winger. He had lost his kind of scoring touch. Nigel de Jong proper DM. इन द फॉरवर्ड लाइन आप देखते हैं, थोड़ा आगे आते हैं, चलो, और डिफेंस में देखो कौन है, खालिद बुलारूस, एडसन ब्राफेड, इतने बेसिकली मिस्टेक्स भरे हुए थे. डेमिस डिजियो वाज सो इनएक्सपीरियंस एट द टाइम, राइट? आई स्टिल रिमेंबर ऑन्ड्रे ऑयर वाज प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड गाइज, और वो भी इतने एक्सपीरियंस नहीं थे, वो भी यूज्ड टू प्ले एट द टाइम, इफ आई रिमेंबर राइट, फॉर ब्लैकबर्न रोवर्स, ठीक है, तो चेक हिम आउट. हाँ नहीं, पीएसवी आइंदोवन, लेकिन ही वेंट बाय ब्लैकबर्न रोवर्स एज वेल. और फिर आप देखियो एलिया, रायन बैबल, इब्राहिम एफले. तो बेसिकली क्या इसका रीजनिंग क्या है, व्हाई आई एम टॉकिंग ऑल दिस, ऑफ कोर्स आयन रॉबिन, राफाएल वैंडरवार्ट, तो सच ब्रिलियंट फॉरवर्ड्स. You have Rafael van der Vaart at that time, arguably उनके पीक में. You had of course Ibrahim Afellay, he was supposed to be the next big thing. बार्सिलोना के लिए खेलते थे. Ryan Babel लिवरपूल के लिए काफी अच्छा खेलते थे उस समय. Then you had obviously Ian Robben, my favorite player, Robin van Persie in the peak of his Arsenal form. Wesley Sneijder, probably Ballon d'Or मिलना चाहिए था. Versus defenders, इतने weak defenders थे, so they focused on the attack properly. तो वो that team could not play as defensive football as the next team. और next team कौन सी है मैं दिखाता हूँ आपको. 2014 की जो वर्ल्ड कप थी नेदरलैंड्स की, राइट? यहाँ पर क्वेश्चन है नेदरलैंड्स का, इसलिए मैं क्विकली दिखाना चाह रहा हूँ कि why Louis van Gaal change systems, change the way that we play, change the mentality. यहाँ पर अच्छा क्रॉस फ्रांस का, लेकिन नहीं वाइड. तो आप देखो सडन से we got few good defenders who are more reliable, और एक सिस्टम वाले डिफेंडर्स थे. कौन? डेली ब्लिंड, ब्रूनो मार्टिन सेंडी, रॉन व्लार एस्टन विला के लिए उस समय डिसेंट प्लेयर थे, ठीक है. स्टेफान डिफ्राई, अगेन ये ऐसे प्लेयर्स थे जो 2 एट द बैक में इतने अच्छा नहीं खेल सकते, लेकिन 3 एट द बैक में दे रियली वर्कड वेल. और ऑब्वियसली विद 3 एट द बैक यू कैन नॉट हैव 4 फॉरवर्ड्स, ठीक है. तो दैट वाज द डिफरेंस वर्सेस द अदर टीम. मिडफील्ड भी आप देखो, मतलब यू हैड पीपल हु हैड ruggedness to them. Gini Wijnaldum, इतने for his tackles, he's for some reason not really known. So a lot of talk here about basically why they changed the formation. Van Gaal, why मतलब इतना systematic क्यों खेल रहे थे? But they left free who? Robin van Persie, Ian Robben. That was 2 people who left free, and that was what it was 2014 में versus 2010 में, and that was the I think for me the peak Ian Robben was then actually. Vida gets a yellow card by the way. तो by the way मैं डिटेल में तो नहीं जाने वाला, because we'll be talking about each team as well as the days go by. लेकिन बिकॉज ऑफ जो पर्सनल है ना, जो अवेलेबिलिटी थी उनके मुताबिक, आई थिंक लुई वैन गाल डिड द राइट थिंग, बिकॉज ही डिडंट हैव एज मेनी क्लासी फॉरवर्ड्स, ही हैड मेनी क्लासी डिफेंडर्स कंपेयर्ड टू 2010 टीम. ही मेड द बेस्ट यूज ऑफ द टीम. और आर्गुएबली आई वुड से 2014 वी शुड हैव बीटन अर्जेंटीना. Argentina of 2014 wasn't like so good in my opinion. But again, a lot of talks हो सकते हैं, and we'll come back to this when we speak about teams. Good question, Kishore Creations. बेल एंड आयरन रामसे तो कार्डिफ सिटी के रूमर्स आ रहे हैं. हाँ, आई हर्ड दैट एज वेल. फुटबॉल प्लीज. ऑफ कोर्स आयरन रामसे हैड, अगर वो होता है तो बहुत ही गंदा एंड ऑफ सीजन हुआ. पहले इंकुकू इंजर्ड, हां, क्रिस्टोफर इंकुकू लुक्स लाइक इज इंजर्ड, एंड दैट इज व्हाई नेशंस लीग इज क्रिटिसाइज्ड. लुक बट हाँ, द लास्ट किक फॉर रेंजर्स जो आयरन रामसे का था, वो था पेनल्टी मिस इन द यूरोपा फाइनल. इमेजिन, बेल के लिए he's had a great time with Real Madrid winning the Champions League. That's the difference. Looking the form this season, Ankit, will you choose Magnan over Loris? On form, yes, maybe, but come on. मुझे काफी लगता है Hugo Loris has been criticized unfairly, थोड़ा ज्यादा criticize किया जाते हैं, मतलब I don't know why. I feel that Hugo Loris should have made a big move. Maybe वो और बड़े क्लब, nothing against Tottenham, but और बड़े क्लब के लिए खेलते तो he may have been respected more. I feel that. और remember, he has been the France captain for a long while. उन्होंने वर्ल्ड कप जीता है भाई. I don't think so we can take away from Loris, but Magnan, oh wow, he is going to be the next France goalkeeper for sure in the long run. Absolutely. Okay, theory of okay, fair enough. Angal bhaiya, could we see Boubacar Kamara getting a senior squad debut? Also, I don't think Guendouzi matches the squad levels in the longer run. Average player. Well, Guendouzi has that energy. एक तो मैं देना चाहूंगा बंदे को, लेकिन हाँ, I agree with you that there are much better players in the France squad. It's just the Nations League है, end of season है, और दे दो भाई, blood in कर लो. और Kamara, as much as people say he may not be ready, यहाँ पर brilliant. ओ भाई साहब, पहले तो इंजरी हुई और मेरे ख्याल से एंकू को नहीं लिया.
set piece भी, और Chouamani at the end, and he almost got it. Maybe the wrong player the ball there, but definitely I see that Boubacar Kamara, he can have a future. देखते हैं अब कैसे करते हैं भाई आस्टन विला के लिए. Yes, he would have made his debut, लेकिन for me Guendouzi is at this point in time more ready. सच में बोलूं तो. What difference will Zidane bring to the French team? Also, why is also eager to get the French job and not manage any club? यार जिडान मेरा दोस्त तो नहीं है, लेकिन जहां तक मुझे पता है, जितना मैं रीड कर रहा हूँ, जितने बेसिकली पीएसजी फैन से भी बात की है मैंने, इट इज जस्ट दैट पीएसजी में जो बवाल चलता है ना, मतलब इतना प्रेशर, अनड्यू प्रेशर इन टर्म्स ऑफ विनिंग द चैंपियंस लीग, दैट तो यार गॉन, एंड ऑफ कोर्स मेसी बीइंग बिगर देन द क्लब, एम्बापे नाउ लिटरली बीइंग बिगर देन द क्लब, तो वो सब चीज है, तो लॉट ऑफ बैगेज है फ्रांस में. एक तो यार यू हैव योर नेशनल एलिमेंट, you have your patriotism, you have to definitely feel that at some point in time, अगर आप manager हो, you would like to manage your national team sometime, some point, वो एक dream होता है, and that is why maybe उसको लग रहा है opportunity with Deschamps being there for such a long time, maybe it's a natural transition, और week in week out वाला pressure वो लेना नहीं चाह रहे with PSG. That might be the thing, and again it's his choice, totally his choice, or maybe he's waiting for who's going to come. Campos will be confirmed, or Croatia winning the ball against France defending, ganda Saliba bhai, Saliba bad one, lekin again he won the ball back. Lekin I have to say that the French team, national team has so much quality abhi, so it's like a club team almost, trust me on that Pratham, that's why you would be really tempted. Are thank you, shout out here, shout out aapko, absolutely. I don't know how do I pronounce your name. I don't know, Larjas. I'm not sure. But anyway, big up to you. Hopefully you have liked, subscribe to both our channels. Portugal का जीतना का chances कितने हैं? Well, मेरा, I don't know if you saw that. Again, रोज ही almost दिखा रहा हूँ आजकल. लेकिन यार मेरा जो early predictions था, जो just after the draws थे ना, I had called it Portugal might just go on to peak in the World Cup. क्योंकि यार इतना हगे थे ना in the qualifiers and even before the qualifiers, कि they were not getting things right. Fernando Santos के पास भी just like France इतना available है Arsenal in terms of the talent, लेकिन Portugal they're not able to get it right, और हो सकता है they might just get it right, or they might reach the finals. Is Benzema playing? No, he's on the bench, Bill. But thanks for joining. He will come on. He will come on. Hopefully, if they are behind, because France, remember, they have lost the first game. Yes, annoying. They can play into competition simultaneously without fatigue. Fair enough here. Very good point there. In terms of football, style and attacking tactics, 2014 World Cup is greater than 2010 World Cup Netherlands. Thank you, Manav. Thank you. Thank you for saying that. क्योंकि काफी लोग बोलते हैं like Louis van Gaal was criticized and Bert was better, but I actually disagree. I felt वो जो free role था ना Robin और Van Persie का, that kind of worked brilliantly. मतलब I like counter attacking sides. Why not? Save, yes, no problem, Vadve, no problem, of course. Ankit Bhaiya, if you have to make an all-time 11 of a nation, then which country will you choose and what will be on lineup? I will choose Netherlands. Okay. So yeah, actually you're giving it away. We are kind of planning that as well in the coming future. We are definitely doing that. और यहाँ पर actually एक football creeks ने एक idea दिया था, वो कर ही देते हैं. Actually आज maybe right now only we can do. So people, we are going to be selecting. Let me put up a banner. Okay. The best 11 not to play in EPL after 2000. What do you say? This century. Now I'll take a lot of comments. Okay. What about this topic, people? You want to carry on and maybe put in your options as well. Best 11 not to play in EPL this century. We can probably do that. Let's start. But we'll slowly come to that. Let me take a few more comments here. Do you think Inter responded correctly to Milan buying Magnan by buying Onana? Onana was very good. Problem is Onana has been suspended for a good while. And that's the only thing really get is a form back. That's the only form. But again, people, start putting your best 11 ever to not play in the EPL. Recently, Dybala agent meeting Real Madrid. No. Dybala to Real Madrid looks like it's not happening. Aryan, sorry to disappoint you. मुझे लग रहा है नहीं हो रहा. That's what I feel like. Onana 18-19 or Magnum. It's got to be Magnan, man. Magnan, I think he kept
AC Milan in the Serie A almost. I would say Magna. Again, maybe recency bias. Onana was brilliant, लेकिन मेरे ख्याल से overall the presence that Magna has and the reflexes that he has, I still feel. What's the best time period you had since you started watching football? Well, क्या कैसे बोलूं, अब जब नया नया प्यार होता है ना, तो that is the best time, right? I think that is how I also feel, यार. मतलब I feel that maybe not early 2000s, but I would say mid 2000s. चलो, mid 2000s was the best. I'll tell you the reason why. Like, I was like so laid back, I was able to give much more time to football. I used to play football a lot as well during mid and late 2000s. So that was also one of the reasons. And of course, I had my favorite player playing for Chelsea, and that was Ian Robin. Put it that way. Like, a great question always from Football Weeks. वैन पर्सी माय फेवरेट टच प्लेयर. पहले मैच में तो स्पेन को लूटा था 5-1. यार, उसमें ना वैन पर्सी को बहुत प्रेज किया जाता है भाई. रॉबिन को क्यों प्रेज करते हैं लोग इतना? कम ऑन मैन, प्लीज वॉच दैट मैच अगेन. सॉरी, आई नो दैट. बिग अप टू यू. वैन पर्सी वाज सुपर्ब. I think you got that one of the goals in the World Cup ever. लेकिन come on man, Robin was fantastic in that game. Come on. It has to be Robin and Van Persie, if at all, right? Let's just put it. I feel they were very unlucky. New Zealand, South Africa somehow in crunch matches. Yeah, I understand किशोर क्या बोल रहा. इतना फुटबॉलर्स खेलेंगे तो उनका करियर छोटा होता जाएगा ड्यू टू हायर चांस ऑफ इंजरी. सब मेसी रोनाल्डो की तरह नहीं है भाई. द थिंग इज यू हैव अ पूल ऑफ प्लेयर्स. आप देखो, मतलब काफी प्लेयर्स को मौका मिल रहा है अपने देश के लिए खेलने के लिए, तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग. थिंक लाइक दैट. एंड ऑफ कोर्स लॉट ऑफ प्लेयर्स आर रेस्टिंग एज वेल. हाँ, इट्स नॉट आइडियल, लेकिन अगेन आई थिंक फॉर अ वर्ल्ड कप ईयर, फॉर अ नेशनल कोच, इट्स इंपॉर्टेंट दीज मैचेस. नेशंस लीग इज इंटरेस्टिंग एट ऑल यार. जितना हाइप था उतना कुछ नहीं है. हाँ, मैचेस में मे बी बिकॉज फर्स्ट 11 नहीं खेल रही, मे बी ओनली say 7 out of 11 are playing, put it that way. वो that I agree, but again, यार, it is a matter of pride, it is a matter of a tournament, and of course, there are some star players और काफी ट्रांसफर नहीं चल रहा है. लाइक इंकू फॉर एग्जांपल, जो अभी बॉल लिए रहे. और बाय द वे, ये गोल होने वाला है. गोल हो गया. ऑफसाइड है क्या? ऑफसाइड, 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 ऑफसाइड. इंकू ऑफसाइड है. लुक्स लाइक ऑफसाइड. चलो. Nana, Zidane is coming back to Madrid. I'm dreaming of it, to be frank, but can happen once Ancelotti stabilizes it both. Okay. Your favorite World Cup team? It's got to be Netherlands team, and I'll come to that for sure. Ankit, here to share my happiness with you. Robert Lewandowski. No other offers were even considered by me other than FC Barcelona, managing FC Twitter. Okay. Managing Barca Twitter. Interesting. Barth. एशियन कप का वॉच अलॉन्ग में मजा आएगा यार. एशियन कप का कितने बजे यार? Because I have an event to go to, which I will also try and cover this week. So let's see. It depends on the timing, but I'll confirm that for sure. African World Cup has the best long ranger goals ever scored in World Cup. Agree. Wow. As in, everyone remembers Diego Forlan. What a World Cup he had, man. I know. Asomia Gyan. Wow. Brilliant players here this World Cup. Absolutely. 2010. Okay. Mbappe. Okay. Manav ka aa gaya. Chalo. So this is the best 11 ever to not play in the Premier League. मानव ने दिया है. Let's see everyone else. Do put in your comments. यहाँ में मुझे देखने दीजिए क्या है number of likes. Because I feel that we can easily get the likes up. We can easily share the link on any social media so that we have double the number of likes. Come on, we just have 47 likes. Don't you think हम ज़्यादा deserve करते हैं? If we do, let's try and share it on social media. It can be a story. I've shared a story. If you can just share that, or maybe share the tweet that I've done. That'd be brilliant. Absolutely helpful if you can do that. लेकिन हाँ, मानव का देखते हैं टीम यहाँ पर. और अगेन यार, पीपल, आप लोग सोच होंगे मैं रोज पूछता हूँ यार, शेयर करो यार. देयर इज अ नीड, ऑफ कोर्स देयर इज अ नीड यार. ज्यादा मजा आता है, ज्यादा लोग आते हैं. एंड ऑफ कोर्स अगेन, नथिंग अगेंस्ट एनीवन हियर. I genuinely believe that we deserve many more people watching. As I'm pretty sure everyone believes that as well. And of course, the more discussions we have, the more questions we have, the more disagreements we have, वो ज़्यादा मजा आएगा. And without people, इतना मजा नहीं आता. That's why I'm saying. And of course, I would love to get a lot of panel as well. लेकिन वही है, मेरे जैसे रोज रात को 12 बजे कौन आने वाला है भाई? Imagine. Neuer, Lam, Ramos, Puyol, Marcelo, Pirlo, Xavi, Iniesta, Messi, Lewandowski, Ribery. काफी इंटरेस्टिंग. अगेन मानव ब्रिलियंट. मतलब आई वाज होपिंग दैट वील गो वन बाय वन. तो हम करेंगे वन बाय वन, थोड़ा ज्यादा मजा आएगा यार. नहीं,
क्योंकि मैच तो लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, इट्स नॉट एज एक्साइटिंग एज व्हाट आई वाज एंटिसिपेटिंग इट टू बी, लेकिन हाँ सेकंड हाफ बहुत इंटरेस्टिंग होगा और हम रिएक्ट डेफिनेटली करेंगे, नो टू वेज अबाउट इट। यहाँ पर बेंजामिन पवार एक देते हुए फ्री किक टू क्रोएशिया। अच्छा, तो यहाँ पर रूल्स क्या करेंगे, एवरीवन वाचिंग, लेट्स वी आर प्लेइंग अ गेम हियर, ठीक है। गेम क्या हो रहा है, बहुत ही इजी गेम है। गेम है, कहाँ गया भाई गायब ही हो गया। बेस्ट करंट 11, मैं चेंज कर दिया थोड़ा सा गेम को, ठीक है। बेस्ट करंट 11 और बेस्ट पास्ट 11 करेंगे, अलग अलग करेंगे, क्या बोलते हो पीपल, वी आर सेलेक्टिंग दिस, ठीक है। बेस्ट करंट 11, नाइस डिफेंडिंग क्रोएशिया, नॉट टू प्ले इन ईपीएल द सेंचुरी, अरे नहीं, नाइस डिफेंडिंग फ्रांस, क्या बोल रहा हूँ। हाँ, लेकिन शुरू करते हैं गोलकीपर, हु इज द बेस्ट गोलकीपर इन द वर्ल्ड हु इज नॉट इन द प्रीमियर लीग इन द लास्ट 12 months. Magnian, anyone for Magnian? Let's put it that way. Start with keeper, exactly. Let's start with keeper and demonstrators. We will come to you. लेकिन we'll go one by one. ज्यादा मजा आएगा, ज्यादा डिस्कशंस होंगे, ज्यादा वोट्स, दो वोट्स मिलेंगे, काफी मजा आएगा, ठीक है। आरसीयूस मैंने आपका भी कर दिया है स्टार, लेकिन आई कम टू यू। लुमानियो, आई कैन सी you've got your left back in, you've got your strike winger in, लेकिन कंडीशंस रिपीट करो तो मेक 11, ओके। तो बेसिकली ये कंडीशंस, कोई कंडीशन नहीं है, दे शुड हैव नॉट प्लेड इन प्रीमियर लीग, ठीक है, बट यू फील दैट इन द लास्ट 1 year दे हैव डन सुपर्ब, ठीक है, दे आर वर्ल्ड क्लास, और करंटली दे शुड बी प्लेइंग इन अ क्लब बट नॉट इन ईपीएल, दैट इज द कंडीशन। तो बेस्ट करंट 11 नॉट टू प्ले इन ईपीएल दिस सेंचुरी, ठीक है, वो नेवर प्लेड फॉर ईपीएल, वो है। एक्चुअली ये रख के रखूं क्या, रख के रखता हूँ, चलो क्या ही तो जाता है। लेकिन हाँ यार, लाइक्स करना मत भूलना, बस इतना है, जो भी आ रहे हैं। तो यार बाकी कमेंट्स में आऊंगा, यस एब्सोल्युटली। या बाबा है क्या घर में, आई थिंक यू एड्रेस्ड बाबा बाय मिस्टेक, नो प्रॉब्लम। मैक्स 2 players per country, okay, fair enough, let's do that as well. Max 2 players per country, that is the rule by Manav. Or rather let's do it क्लब करें क्या, क्योंकि हम ईपीएल की बात कर रहे हैं, और मैक्स 2 players पर, हाँ, मैक्स 2 players पर क्लब, दैट इज द रूल। कोटवा, ओके, इंटरेस्टिंग। रियल मैड्रिड फैन सेइंग कोटवा, भाई काफी कोटवा के लिए आ रहे हैं। कसियास अभी has he not retired Casillas? I thought he's retired, right? Did he finally retire? अच्छा नहीं, खेल रहे हैं भाई, अभी भी खेल रहे हैं कसियास, अभी भी खेल रहे हैं। नहीं, रिटायर हो गए, कहाँ बोल रहा हूँ मैं यार, he's definitely retired. तो Casillas is not playing. Neuer, fair enough, but again considering the last 12 months or so, चलो लास्ट 12-15 महीने सोच लो, मतलब that is what we are thinking about. लास्ट यूरोस के स्टार्ट से, लेट्स पुट इट दैट वे, लास्ट यूरोस के स्टार्ट से who has not played in EPL and who is the best? Courtois played for Chelsea, और मैं और चेंज नहीं कर रहा रूल्स, ठीक है। 2 max players per club. You can basically select or consider the form from last Euros and of course last Copa America, put it that way. But definitely they should have not played for EPL ever. Courtois has played for EPL, absolutely. Call any panelist. तेजस लगता है बोर हो गया अंकित की आवाज से। यार अगर पैनल आते तो बुलाता, ऑब्वियसली मैं बुलाता हूँ, लेकिन वही रोज लोग अवेलेबल नहीं होते। I'm literally doing this every day, Tejas. I don't know if you have joined me, but again, literally every day finding a panel and depending on them is not Ankit. I respect them, I love them, and I want them to come on. But again, I don't want to kind of spoil everyone's sleep as well at the same time. और वही है, मैं बुलाया था couple of panels, they were not available. फिर बोला big deal है, मैं खुद ही करता हूँ, मतलब I can't go on calling अगर वो मना करते हैं, and they might be busy, they might not be available, they might not be interested, जो भी है। तो तेजस अगर आप बोर हो गए, सॉरी अबाउट दैट, हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कर रहे हैं यहाँ पर। दिस इज बेसिकली 11 ऑफ पीपल हु हैव नेवर प्लेड इन द प्रीमियर लीग, हु आर द बेस्ट इन द लास्ट 12 months, द बेस्ट फॉर्म लास्ट 12 to 15 months. नॉयर, यस, पहले गोलकीपर कर रहे हैं, कसियास नॉट, ही इज रिटायर्ड, बाय द वे दे शुड बी रिटायर्ड. Courtois has played in Premier League, exactly, so Courtois doesn't count people, Courtois doesn't count. Because they have played in Premier League. They should have not played in Premier League ever. The Spain goalkeeper, okay, Unai Simon is what Luman is saying. How to watch? Gudu Panda, you can watch on Sony 10.2, Sony Live or Sony 10.1. Sony 10.1 में मेरे ख्याल से दूसरा मैच आ रहा है,
आई थिंक इट्स आइसलैंड का मैच आ रहा है. फॉर सम रीजन ऑस्ट्रिया डेनमार्क हो ही नहीं रहा. आई डोंट नो अभी तक किसी को पता चला क्यों नहीं हो रहा है. मुझे तो अभी तक पता नहीं चला क्या हुआ इस गेम में. देखते हैं कुछ कमेंट्री आई कि नहीं. लेकिन यार कुछ अपडेट तो दो भाई, कुछ अपडेट तो दो. कैसे वेबसाइट से मेन वेबसाइट का अपडेट ही नहीं, कोई मुझे बता भी नहीं रहा है क्या हुआ वहां पर. कोई नहीं, नो प्रॉब्लम. लेकिन हाँ, ऑस्ट्रिया डेनमार्क नॉट हैपनिंग, सो वी आर वाचिंग डेफिनेटली क्रोएशिया फ्रांस व्हिच इज 0-0 ऑन सोनी 10-2. अरे तेजस कोई नहीं यार, मतलब आई जस्ट वांटेड टू मेक यू अंडरस्टैंड कि बहुत बार क्या होता है ना, नाइस काउंटर अटैक, फ्रांस का गोल होने वाला है, लेकिन नहीं, क्रोएशिया का गोलकीपर बढ़िया सेव, बढ़िया सेव. आई थिंक इट वाज दियाबी, वाज इट दियाबी थे क्या राइट विंग में फ्रांस के लिए. अच्छा शॉट था, दियाबी थे. यस. ओके, केलोर नवास, केलोर नवास वेरी वेरी अंडररेटेड एब्सोल्युटली. इतने कंडीशन मत रखो, वी शुड रिमूव क्लब फैक्टर, अदरवाइज वेरी लेस ऑप्शंस. चलो ठीक है, चलो आप पिक करो फिर. मैं ट्राई एंड पुट पीपल ओनली, यू नो, 2 फ्रॉम मैक्सिमम 1 क्लब. ट्राई एंड पुट दैट, क्योंकि थोड़ा सा विल ट्राई एंड, यू नो, ब्रिंग इन द एंटायर वर्ल्ड. इट्स अ फैन चैनल फॉर ऑल टू सी, रिमेंबर. श्रेय बिग अप यार, बिग अप. कैसे हो? आप ही अपना कमेंट करिए अगर आप हो. वी आर पिकिंग द बेस्ट 11 एवर नॉट टू प्ले इन द प्रीमियर लीग, गोइंग बाय द फॉर्म ऑफ लास्ट 12 to 15 months. बढ़िया शॉट वापस से फ्रांस का, लेकिन क्रोएशिया गोलकीपर जस्ट अबाउट कीपिंग देम इन द गेम. Austria versus Denmark match delayed due to power outage in the Ernst Happel Stadium shows how the clowns are UEFA treat the Nations League. Shitty management, absolutely bro. मानव यार, बिग अप यार, थैंक यू. एटलीस्ट आप जाकर ढूंढे और मुझे शेयर करने को काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी दिया आपने, तो थैंक यू. दिस इज द रीजन पीपल व्हाई ऑस्ट्रिया डेनमार्क इज नॉट हैपनिंग. लेकिन हाँ, दिया भी with a decent chance, and then I think was it Dinia who got the shot and the follow up shot, वो भी अच्छा था यार. डोनोरुमा इज गोलकीपर. यस, आप अगर नहीं, ये चौमनी थे भाई, चौमनी थे. डोनोरुमा इज गोलकीपर. हाँ, क्योंकि यार ही हैड ब्रिलियंट यूरोज. आफ्टर यूरोज वुड यू नॉट से माइक मैग्नियन, कोई माइक मैग्नियन का नाम नहीं ले रहा. ऑस्ट्रिया में लाइट चला गया. ओके, योर फुटबॉल नॉलेज इज ग्रेट. अरे तेजस, थैंक यू, थैंक यू. आई होप यार, जनरली इवन आवर कंटेंट इज नॉट जस्ट द नॉलेज, we try and produce different content. हाँ, अभी ज्यादा वॉच अलॉन्ग हो रहे बिकॉज ऑफ मैच बीइंग देयर एवरी डे लिटरली ना. लेकिन हम काफी कंटेंट भी करते थे जस्ट एंड एवरीवन एल्स ऑन बोथ द चैनल्स. तो काफी प्लेलिस्ट है, तो काफी बार आप मिस कर दिए होंगे, तो डू चेक आउट. थोड़ा टाइम मिले तो नो, जस्ट चेक आउट प्लेलिस्ट, क्योंकि वी डू अ लॉट ऑफ क्विजेस इन द पास्ट, वी डू सम हिस्टोरिकल सीरीज भी, and some kind of different Ankit's bit that you can see there. Austria में बत्ती गई. Okay, Austria, Denmark full of fans singing with candles. Wow, that's brilliant. Suarez robbed. Nawaz goalkeeper, goat, awesome. France have such a great talent. Even second string looks so strong on paper. Achha, yes. Shrey, I don't know if you heard that. So we are doing a topic here. I don't know, Shrey is in his own world. But thanks for sharing, Shrey. But this is what we are doing. Best current 11 not to play in EPL this century. ठीक है, तो ये है. Why can't I see Manav's comments? Interesting. आपने शायद ब्लॉक कर दिया मानव को. That's right. Today match Academy boy on Nkunku and Diaby. Correct. PSG से निकले थे दोनों. अंकित भैया, how was Neymar Junior in today's match versus Japan? भाई मैंने by the way देखा नहीं है, to be very honest about it, because like I'm doing like literally watch along and stuff like that. काम भी रहता बाकी, तो I wasn't able to watch that match, but hopefully I'll be able to watch the highlights and let you know. तुषार, फ्रांस टू एवरी टीम बी लाइक, क्या तैयारी करेगा तू? मैं हर मैच में पूरी 11 बदल दूंगा. या मैग्नियन वन द लीग वन आल्सो, राइट, विद लीग. एग्जैक्टली. तो लास्ट 15 महीने का हम देख रहे. स्क्रीन पे तो स्टार्टिंग 11 बना वाले साइट ओपन कर लीजिए, देन बेटर होगा. ओके, ये करते हैं, मे बी देन पीपल विल स्टार्ट पुटिंग इन देयर वोट्स. तो मैं तो यार अपना डाल रहा हूँ और मैं चेंज करने वाला हूँ एज पर योर विश. ठीक है, वो कर लेते हैं. तो ये रहा, चलो ठीक है. तो अभी तक कोई पिक नहीं किया है. क्लियरली 4-3-3 जाएंगे क्योंकि दैट इज द मोस्ट पॉपुलर. लेकिन यू कैन सी ऑन स्क्रीन. लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड टॉपिक का नाम भी है. तो गोलकीपर अभी तक मैं तो इसका नाम लेने वाला हूं. आप बोलिए, डिबेट जो भी है चैट में. टेल मी वन रीजन व्हाई माइक मैग्निया शुड नॉट बी द गोलकीपर. Again, we are taking last 15 months into consideration. हाँ, you can argue कि नेशनल टीम के साथ क्या किए घंटा, लेकिन डोनारुमा नेशनल टीम के साथ ही किए मेनली. कम ऑन, यू नॉट गोइंग टू काउंट पीएसजी, विल यू? और पीएसजी में भी लीग में केलोर नवास वर्सेस डोनारुमा,
और वो ये दोनों आप पिक नहीं करोगे क्योंकि दोनों हैव नॉट बीन एज कंसिस्टेंट बिकॉज उनको इतना कंसिस्टेंटली मौका नहीं मिला है. Whereas Magnia, apart from the Euros, he was there. He was very much there. So Mike Magnia has to be the guy for me. Neuer definitely has to be considered. लेकिन लास्ट 15 महीनों में सच बताइए, डी monsters, would you like to say that Neuer's form was better than Mike Magnia? Just tell me. Well, not that I'm a kind of supporter of AC Milan as well. लेकिन just about that. Again, I don't want to dominate this chat. लेकिन अभी के लिए वो डालो. मुझे ये बताइए why not Magnan and why Neuer? कोई भी बता रहा है तो. Okay, Neuer was great for Bayern this season. Fair enough. Neuer, अच्छा चलो, ये अभी Neuer जा रहे. भाई Neuer रख लो अगर कोटवा एलिजिबल नहीं है तो. ठीक है, तो माइक मैग्नियो है. Just silently everything for his club. You just heard that. You just heard that. Brilliant. Rules of this game. कोई नहीं, रूल सिंपल है, आपके स्क्रीन पर है. बेस्ट, आप नीचे देखिए, बैनर दिख रहा है आपको, बेस्ट करंट 11. ठीक है, नॉट टू प्ले ईपीएल द सेंचुरी. उन्होंने ईपीएल खेला नहीं है और इस सेंचुरी का बेस्ट 11 है जो करंटली भी खेल रहे. हाँ, ज्यादा एक क्लब से हम पिक नहीं करेंगे, लेकिन ऑब्वियसली मैक्सिमम आई एम सेइंग 2 पर क्लब. लेकिन हाँ, दैट इज ओनली इफ अगर जाता है बहुत सारे एक क्लब के साथ हो जाते हैं, देन इट वोंट बी फेयर, राइट. ये तो पूरा आधा बायर्न म्यूनिख आप डाल दो. दैट्स व्हाट वी आर अवॉइडिंग, सिंपली पुट, राइट. यार डाविड दिया ईपीएल में ईपीएल में खेले. पोल, चलो पोल कर देते हैं. लोग बोल रहे पोल कर दो, चलो एक पोल डाल देते हैं. तो यहाँ मैं एक पोल डालने वाला हूँ, लेट्स सी. अच्छा, तो यहाँ पे लेट मी स्विच द अकाउंट. अच्छा नहीं, आई कैन नॉट. भाई आई एम एंडिंग द लास्ट पोल बाय द वे एंड आई एम क्रिएटिंग अ न्यू पोल. ठीक है, हु वाज बेटर इन लास्ट 15 months with club and country? Mike Magnia, Donnarumma, और कौन है ऑप्शन? केलोर नवास एंड नॉयर. ऑफ कोर्स नॉयर का स्पेलिंग क्या है भाई? हाँ ठीक है, डाल दो. ठीक है, तो आई हैव पुट इन अ पोल पीपल. आप वोट्स कर दीजिए एंड आई कम बैक टू दैट. हाउ इज दैट आइडिया? ठीक है, तो मैंने एक पोल डाला है. प्लीज चेक दैट पोल. इट्स अ फ्रेश पोल. Let's do that and then we'll come back. If you have to pick just 15 months form, then Magnan, yes. कोटवा खुद को वैसे भी चेल्सी का नहीं मानता है, तो उसको डाल दो. कोटवा मानता है, बाकी लोग नहीं मानते. चेल्सी फैन तो लाइक यार क्यों आया था चेल्सी में. इट्स फाइन, एक्सट्रीमली सॉरी. क्या हुआ? व्हाट हैपेंड अद्वे? अरे कोई नहीं. हेलो, लेट्स एक्चुअली मूव ऑन टू लेफ्ट बैक. यहाँ पर हाफ टाइम हो गया और ऑनेस्टली मैं बोलूं, इट हैज नॉट इम्प्रेस्ड मी. द हाफ हैज नॉट इम्प्रेस्ड मी. खचाखच भरा हुआ है स्टेडियम with all the Croatians and especially neutrals as well. आप देखो क्या बढ़िया स्टेडियम है स्प्लिट में, लेकिन भाई बहुत ही डिसअपॉइंटिंग यार. डू टेक दैट पोल पीपल. आई विल कम टू द पोल इन सम टाइम. देखते हैं, मैं देख रहा हूँ अभी 13 वोट्स हुए, तो जब 20 वोट्स हो जाए ना, आई विल ट्राई एंड एंड इट. लेकिन हाँ, लेफ्ट बैक देखते हैं. लेफ्ट बैक कौन है? लेफ्ट बैक, फुल बैक देखते हैं. दानी एल्वेज लास्ट 15 महीने में बेस्ट फॉर्म. दानी एल्वेज, कम ऑन, ही वाज रियली गुड फॉर बारसा, बट कम ऑन, नॉट बेस्ट यार. गुड. हर्नांडेस इज अ गुड चॉइस. लास्ट 15 महीनों में आर्ग्यूबली आप बोलोगे रॉबिन गूजन्स, जो उनका था यूरोज. हाँ, आई नो इंजर्ड थे. रॉबिन गूजन्स ऑफ जर्मनी, नो, रॉबिन गूजन्स ऑफ एटलांटा. हाउ अबाउट माइले? मैं बोलता हूँ, मैं कुछ ऑप्शन देता हूँ. अरे एंडी रॉबर्टसन भाई, प्रीमियर लीग से. आप देखो टॉपिक क्या, शायद भाई, लाइक लेट्स गेट इन. Alphonso Davies definitely is an option, लेकिन Alphonso Davies was injured especially in the last 15 months unfortunately, right? तो वो है थोड़ा सा. और हम ऑल टाइम भी करेंगे एक और स्ट्रीम में, लेकिन आज के लिए थोड़ा ऑन फॉर्म जा रहे हैं, राइट. तो यहाँ पर अल्फोंसो डेविस एक ऑप्शन है. वी हैव ऑब्वियसली और कौन ऑप्शन है? जॉर्डी अल्बा. चलो डाल देते हैं भाई, जॉर्डी अल्बा इतना कंसिस्टेंटली खेले बारसा के लिए. मेंडी, दैट इज फर्लैंड मेंडी, एंड Nuno Mendes for PSG.
और कौन ऑप्शन है, और कौन है? थियो हर्नांडेस, और कौन ऑप्शन है? आई थिंक वी हैव अल्फोंसो डेविस, जॉर्डी अल्बा, फर्लैंड मेंडी, नूनो मेंडेस, थियो हर्नांडेस, मे बी रॉबिन गुजन्स एट लेफ्ट बैक. तो I think it's enough. I think it's enough. Again, I'm not seeing यार कुछ मेजर लेफ्ट बैक उसके अलावा थे. मे बी लोडी लोडी ऑफ एथलेटिको, उनको भी डाल देते थोड़ा सा. तो आप देखो ये इतने सारे ऑप्शंस है. मैं अभी कमेंट किया हूँ. तो हु हैज बीन द बेस्ट लेफ्ट बैक इन द लास्ट 15 मंथ्स, अगर आप बेसिकली काउंट करो प्रीमियर लीग को नहीं. ठीक है, ये सब ऑप्शन है लास्ट 15 मंथ्स. आप देखिए, और यूरोज और कोपा अमेरिका के टाइम से मैं बोल रहा हूँ. David Alaba is also an option. Yes, David Alaba is also an option. Absolutely. The comments clearly shows majority follows EPL. So for despite the condition, everyone is telling players from EPL. अरे इसलिए topic is non-EPL. I want them to think different. लेकिन हाँ, Alphonso Davies surely dug out football channel in the house. That's Doug. Big up, bro. Good to see you back live, and people who check him out. Great Liverpool fan who knows his stuff inside out. Does follow the Bundesliga also very closely. लेकिन Doug Alphonso Davies in the last 15 months, and that's the caveat. I'm looking at basically form as well. I doubt it. Philip Lahm, we'll do an all-time. Usme Philip Lahm hoga. Ferland Mendy is what Ankit, I did predict this game to be a boring one. इसलिए हम अलग ही टॉपिक कर रहे हैं. Alaba for sure, Ferland Mendy, Alfonso, Nuno. Oh, तो बहुत ही स्प्लिट है यहाँ पर, बहुत ही स्प्लिट है. तो मुझे लगता है हर एक का मैं एक पोल डालने वाला हूँ. ठीक है, तो यहाँ पर यार गोलकीपर के लिए सब लोग वोट कर दीजिए. गोलकीपर के लिए मैंने एक पोल डाला था, तो होपफुली एवरीवन वोट्स. सरप्राइजिंगली केलोर नवास हैज नॉट गॉट अ सिंगल वोट. आर यू सीरियस? Keylor Navas has not got a single vote. Come on, people. We can do better. Goalkeeper of the last 15 months not to play in the Premier League ever. So let me know who is your choice. मैं देख रहा हूँ यहाँ पर 17 वोट्स हो गए. चलो 20 वोट्स होने पर मैं वहां पर चेंज करने वाला हूँ टू अ लेफ्ट बैक. ठीक है, लेकिन इट बी इंटरेस्टिंग आप लोग किसके लिए जा रहे हो फॉर द गोलकीपर इन द पोल राइट नाउ. लेट्स सी. आई एम थिंकिंग इट्स गोइंग टू बी बिटवीन माइक मैग्नियो एंड नॉयर probably. या तो it's going to be, I don't know, maybe late Donnarumma will take the position, possibly. I don't know. Let me know about that. लेकिन I am seeing Neuer still leading. Neuer is still leading. अभी देखते हैं और कोई ऑप्शन, और कोई कर रहा है वोट. नहीं तो मैं एंड कर देता हूँ. लास्ट 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Come on, Mike Magnia, come on, get in the votes, man. Come on, Mike Magnia, come on. 2, 1. अरे भाई साहब, I can't believe it. I just ended the poll. I can't believe it. इतना देर रहा पोल, ठीक है, फिर भी बराबर. I can't believe it. It's equal, man. It's equal. Mike Magnior को 36% वोट्स मिले हैं and same number of votes मिले नॉयर को. अरे भाई साहब, ये तो मतलब तो स्क्रीन में जो है वो चेंज नहीं होने वाला. बिकॉज लाइक टाई ब्रेकर का क्या है? टाई ब्रेकर का, कम ऑन, लेट मी डिसाइड इट. व्हाट डू यू थिंक? इट्स फेयर, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड ऑलमाइटी ब्लूज. लेकिन लेट्स एक्चुअली पुट इन अ लेफ्ट बैक का पोल नाउ. बेस्ट लेफ्ट बैक इन द वर्ल्ड इन लास्ट 15 मंथ्स नॉट टू प्ले इन ईपीएल. ठीक है, तो लास्ट आई थिंक अल्फोंसो डेविस के काफी ऑप्शंस थे. द कैच इज लास्ट 15 मंथ्स, आई नो, बट स्टिल पीपल आर वोटिंग. मतलब काफी सारे कमेंट्स आए थे. एक और कमेंट काफी मैंने देखा है, वो है फर्लैंड मेंडी का. तो फर्लैंड मेंडी ऑप्शन तो होना बनता है डेफिनेटली. हु एल्स यहाँ पर? तन्मय यार, डेनमार्क ऑस्ट्रिया, डेनमार्क में बत्ती चल गई, इसलिए वो मैच नहीं हो रहा है एटलीस्ट फॉर टाइम बीइंग. और कौन थे यार ऑप्शंस? आई एम लुकिंग एट द ऑप्शंस यहाँ पर लेफ्ट बैक के लिए. थियो हर्नांडेस. चलो थियो हर्नांडेस एक ऑप्शन डेफिनेटली होने चाहिए. और एक और ऑप्शन कौन थे? और मैंने शायद डाला था एक कमेंट उसमें. तो लेफ्ट बैक और कौन ऑप्शन है भाई? पीपल हैविंग देयर ओपिनियन. एब्सोल्युटली मेंडी इज गुड. ओके, मेंडी एंड मेंडेस. चलो डाल देते हैं नूनो मेंडेस को. व्हाट डू यू थिंक? और अलाबा, दाविड अलाबा को डाल देते हैं. चलो दाविड अलाबा, लेकिन नहीं यार, रियल मैड्रिड से एक हो गया. चलो एक नूनो मेंडेस को डाल देते हैं. ठीक है, दाविड अलाबा सेंटर बैक में हम ऑप्शन डालेंगे.
ठीक है, तो मैंने यार आई हैव स्टार्टेड द पोल पीपल, एक नया पोल है दैट इज फॉर द बेस्ट लेफ्ट बैक इन द लास्ट 15 मंथ्स। लेट मी नो, क्योंकि यहाँ पर भी काफी वोट्स आ रहे थे और आई वाज इन टू माइंड्स एज वेल। मुझे बताइए इन टर्म्स ऑफ द वोट्स, टेक 2 minutes, जस्ट वोट। और हाँ, whoever is coming, do not forget to like the stream। और आपने नहीं किया है इवन इन टर्म्स ऑफ सब्सक्रिप्शन, लेट सब्सक्राइब हमारे दोनों चैनल्स में, because yes, we are on the road to 4K on both the channels, very much so people, with your help। And we'll start membership very soon। मैं अनाउंस करने वाला हूँ within a couple of weeks। लेकिन हाँ, that's something मैं देख रहा हूँ, but I am certainly seeing that as of now Ferland Mendy is leading people। For all of you जो अल्फोंसो डेविस चाहते हैं, come on, get in your votes and let's see जो ज्यादा वोट मिलेगा वही जीतेगा। बेस्ट लेफ्ट बैक इन द वर्ल्ड इन द लास्ट 15 months not to play in the EPL। ठीक है, तो थियो हर्नांडेज एसी मिलान प्लेयर, नॉट अ बैड वन एज वेल, लेकिन फर्लैंड मेंडी इज लीडिंग एज एट दिस पॉइंट इन टाइम। और देखते हैं बाकी लोग क्या कर रहे हैं। यहाँ पर करीबन 1 मिनट हो गया है वोट्स के, एंड आई एम सीइंग, चलो 18 वोट्स हो गए अभी तक, और मैं देख रहा हूँ फर्लैंड मेंडी अभी तक क्लियर विनर है। लेकिन आई विल गिव इट अनदर कपल ऑफ मिनट्स, क्योंकि यस इट विल बी फेयर, एवरीवन कम्स इन, एवरीवन वोट्स। हाँ, इफ यू ऑल लाइक द स्ट्रीम, बाकी लोग भी आएंगे और वो लोग भी वोट करेंगे। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 20% गया है ऑलमोस्ट अल्फोंसो डेविस को, नूनो मेंडेस को, फर्लैंड मेंडी को 40% और 25% यार थियो हर्नांडेज। अच्छा, 16-16, 25-16 हो गया अभी। चलो ठीक है, अभी देखते हैं लीड में कौन है। लेट मी एक्चुअली चेक द वोट्स अगेन। ऑलमोस्ट अ मिनट एंड हाफ आर डन एंड आई एम सीइंग 20 वोट्स इन। चलो 25 वोट हो जाते हैं एंड विल एंड इट हियर। लेकिन होपफुली, चलो यहाँ कमेंट भी ले लेते हैं। अलाबा विल कम बैक फॉर सेंटर हाफ। फर्लैंड मेंडी, ठीक है, मैं अपना वोट डाल देता हूँ मीनवाइल। ठीक है, अपना वोट मैं डायरेक्टली टीम में डाल रहा हूँ। आई थिंक दिस गाय डिजर्व्स इट। मतलब मेरा ये ख्याल है, मतलब लास्ट 15 महीने के फॉर्म को देखकर, वही लास्ट 15 महीनों के फॉर्म को देखकर नूनो मेंडेस मेरे लिए होते सेकंड, थियो हर्नांडेज थर्ड होते और अल्फोंसो डेविस फोर्थ। वो मेरा रैंकिंग फॉर द लास्ट 15 months ओनली, and that is from the Euros onwards, I'm saying, right? Remember, Mendy and Mendes, okay, Ferland Mendy has to be the one. Neuer, Mendy is a good left back. Mike Magno is my opinion. Super impressive for AC Milan and Lille, back-to-back titles. Baki what the poll says, absolutely. It's equal and that's why we put Magny on. Nawaz be like, up to आदत ही मुझको, absolutely. Okay, Mendy, but to cut the hate, put Theo Hernandez. Hello, Ankit Bhaiya, hello as well. To Tanmay, Courtois, nahi option because he's played the Premier League. Tushar, Theo Hernandez should be just one, okay. Offside 36 पे टाई है, so you should decide. Thank you. Mania gets in, yes. मैं अभी ले रहा हूँ वो सब कमेंट्स जो बत्ती गई थी। एग्जैक्टली, कोर्टवा, जोड़ी अल्बा हमने नहीं डाला है ऑप्शन, बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी वो नहीं थे, यू नो, कंपेयर टू मे बी मेंडी, मे बी एन अलाबा, इवन मे बी एक अल्फोंसो डेविस जब खेल रहे थे, फर्लैंड मेंडी एंड इवन थियो हर्नांडेज। मेंडी वाज बीस्ट, फेयर इनफ। Courtois, yes, but Courtois has played in the Premier League, that's why we didn't pick him in this team. Theo Hernandez gives defensive work rate, but Mendy is good at defending as well as attack. Okay, fair enough. मेरा वोट मेंडी को गया. Okay, would have either Militao as centre back. Okay, we'll include that. Ankit by Chelsea are in lead to sign Dembele, but looking at his injury history and he won't survive the Premier League. You never know. We never know. Tuchel के अंदर खेले हैं. Maybe we manage better. Maybe some people have a good medical history in certain clubs. Hazard के लिए बहुत अच्छा था Chelsea, remember. Please consider Benjamin Mendy. अरे नहीं भाई, we shouldn't even be taking Ines, to be honest. Not worth it. ज्यादा यूज नहीं करते हो, आपका मैसेज किया। ओह अच्छा तन्मय, सॉरी यार, हाँ मैं मैसेंजर काफी यूज नहीं करता हूँ। मुझे आप करिए इंस्टा में आप करिए, बिकॉज ही इज 19 ऑल्सो, व्हाई नॉट Kostic because he's more of a wing back. तब मैं पिक करता Perisic and Kostic are more wing backs, maybe even Ben Chilwell and Alonso. लेकिन again, Ben Chilwell has been injured for a long time, और वो, हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, Ben Chilwell और Alonso तो दोनों खेले in the Premier League, लेकिन हाँ Kostic and Perisic would have been good shouts. हाँ, by the way, Perisic would have been an option. He has not yet played in the Premier League, despite वो playing for Tottenham next season. Yeah, Lodi should have been an option. Pau Torres plus Araujo. Okay, let's see center backs. नेमार के साथ कहाँ तक गया नेगोशिएशन? चलती अभी ब्रेक है भाई, नेमार अभी ब्राजील के लिए खेल रहे हैं, वापस आएंगे तो बात करेंगे। पेरिसिस स्पर्स कैसे चला गया यार, वो कॉन्टे कनेक्शन और कुछ नहीं है, और ऑफ कोर्स वहां स्टार्ट करता है यार फॉर स्पर्स प्रोबेबली।
Not about working so hard. I hope I'm entertaining you guys because there's a lot of interesting topics that we always discuss about during these streams. And if अगर आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करोगे तो आप जानोगे, मनी करत आप जानोगे उसके बारे में. 4-3-3 wing backs won't be that good exactly. Diego, ओके, इंटरेस्टिंग दैट डिएगो सिमियोने के लॉन्डे को देखा. फेयर इनफ. बट यहाँ पर देखते हैं, मैंने मेंडी को डाला है. वोट्स यहाँ पर देख रहा हूँ, वहां पर चलो 25 वोट्स हो गए हैं. आई वाज होपिंग फॉर लिटिल बिट मोर वोट्स. एंड यार सब लोग लाइक भी कर दीजिए, भूलना मत. 75 लाइक कर दो यार नेक्स्ट 3 मिनट में. चलो लेट्स गेट टू 75 लाइक्स इन द नेक्स्ट 3 मिनट्स एंड 30 वोट्स इन द नेक्स्ट मिनट. व्हाट डू यू से? क्वाइट इजी. आई एम सीइंग फर्लिन मेंडी गेटिंग 41% वोट्स. तो यहाँ पर तो एब्सोल्युटली नो डाउट. ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेटली आई एम सीइंग दैट आई एम एंडिंग द पोल. चलो बिल्कुल भाई. पेरिसिस पर्स आया बिकॉज ऑफ ओके या पैरिटी इज आल्सो वन ऑफ द रीजंस. एब्सोल्युटली बिल्कुल. लेकिन हाँ, कॉन्टे फैक्टर आई थिंक इज ह्यूज यार. इट कम्स डाउन टू द मैनेजर. जेन्युइनली बिलीव क्योंकि पैरिटी के साथ आप रोज नहीं बिताओगे ना, बिताओगे रोज कॉन्टे के साथ. लेकिन हाँ, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन एग्जैक्टली. ओके, कुलीबाली. तो भाई कुलीबाली इन द लास्ट सेंचुरी समवन हु नॉट प्लेड इन द प्रीमियर लीग, जो करंट भी खेल रहे हैं, कुलीबाली इज डेफिनेटली वन ऑफ द शाउट्स. लेकिन लास्ट 15 महीनों में हु हैव बीन ग्रेट. तो इन द सेंटर हाफ पीपल लेट मी नो कौन होगा ऑप्शन सेंटर हाफ में. बेस्ट सेंटर बैक पेयरिंग इन लास्ट 15 months not to play in EPL. ठीक है, ऑप्शन जाते हैं अलाबा / मिलिटाओ. एक सेंटर बैक पेयरिंग है. दूसरा सेंटर बैक पेयरिंग किसको बोलोगे भाई? और कौन से ऑप्शन है सेंटर बैक पेयरिंग हु नॉट एवर प्लेड इन प्रीमियर लीग इन द लास्ट 15 months? चलो कौन यूरोज कौन जीता था? इटली. तो लेट्स पुट इन किएलिनी. यस ऑफ कोर्स लास्ट 15 महीने में काफी खेला है उन्होंने, तो व्हाई नॉट बोनुची एंड किएलिनी. और कौन है ऑप्शंस? आई थिंक प्रोबेबली आप बोलोगे अराहो शुड बी इन. अराहो एंड पीके. आई नो as a player they not do brilliantly, like I would still pick them I think in these options. और कौन है? Maybe I don't know. Tomori I don't think is done so well to be picked in this 11. Who else is an option? Maybe the Bundesliga, maybe. I think Nicolas Sula is not. He was not so good. I really don't think he was so good. Maybe I don't know. Matt Hummels, nahi. Nahi. Matt Hummels is probably not also in form. Pau Torres, yeah. Pau Torres को डालते चलो. Pau Torres और Albiol. ठीक है. तो मैंने डाला है. I know काफी. I think if I'm wrong 3 पेयरिंग्स तो भाई बारसा ये स्पेन से ही है. बाकी लोग के देख लेते हैं. स्क्रीनियर, हाँ यार वो रहना चाहिए. एक्चुअली मैं चेंज कर रहा हूँ. अराहो पीके, सॉरी भाई, मैं डाल रहा हूँ स्क्रीनियर और बास्तोनी. ठीक है, हाउ इज दैट? आई हैव पुट अ पोल पीपल. लेट मी नो व्हाट आर योर पोल रिजल्ट्स. और यहाँ पर हाफ शुरू होते हुए क्रोएशिया फ्रांस 0-0. सेकेंड हाफ इज स्टार्टिंग, सो विल बी फोकसिंग ऑन द गेम एज वेल एज दिस. लेकिन हाँ, आप देखते हैं कौन से सेंटर बैक पेयरिंग के साथ जाते हैं एंड विल टेक द पेयरिंग टुगेदर. नहीं तो बहुत टाइम लगेगा. ठीक है, तो आई डोंट नो, आई माई सेल्फ आई एम काइंड ऑफ कंफ्यूज. और आपके पास अगर कोई और ऑप्शन है तो बताइए कमेंट्स में. आई ट्राई एंड टेक दैट एज वेल. लेकिन हाँ, आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ वोट्स कमिंग इन होपफुली. और बाय द टाइम वी गेट टू 20 वोट्स हम शायद एंड करने वाले हैं ये. ठीक है, 25 वोट्स. चलो 25 वोट्स में वील ट्राई एंड एंड इट. मैं बोनुचो डाल दिया, बोनुची है, समझ जाइए. ठीक है, स्पेलिंग एरर हो गया है वहां पर. लेकिन आई एम सीइंग क्रोएशिया अटैक, लेकिन नहीं, फ्रांस काइंड ऑफ डिफेंड अगेन. सो यहाँ पर लेट मी सी द वोट्स अगेन. ओके, बाय द वे यार, लाइक्स, कम ऑन, वी कैन गेट टू इजीली 80 लाइक्स. 80 likes and 30 votes. What do you say? 80 likes and 30 votes. Abhi, while we are selecting the center back, we can easily do that. People, let's get in there. We all need to do that. We can easily do that. लेकिन हाँ, Pau Torres Albiol, man, I was hoping a lot of votes. क्या हुआ? Pau Torres Albiol नहीं अच्छा लगा आपको? Kind of strange, हाँ? मुझे लग रहा था Pau Torres Albiol को मिलेंगे काफी votes. नहीं? चलो जनता बोल रही है प्रॉब्ली नहीं. लेट मी टेक अ फ्यू कमेंट्स मीनवाइल. रूडिगर भाई प्रीमियर लीग में खेला है.
Alaba has to be there. Okay, Militao, Alaba, Militao, simple. Chiellini. Uh, Tejas, I'll come to your question. Bhaiya, your World Cup top four predictions, I'll come to that. Manikarat. Lekin, even Syed, I'll come to your question. Nicholas Sule and Hernandez. Fair enough. Lucas Hernandez, not an option. मैंने नहीं डाला था. Skriniar, Pau Torres and Albiol, Kimpembe. यार, come on. Kimpembe यार काफी criticism झेला है वो तो. Militao plus Alaba, European champion, La Liga champion. Yeah, Militao and Alaba, very good shout. Chiellini and Bonucci is a legendary jodi of centre back. मणिकरण आएंगे, प्लीज स्पैम मत करिए. नहीं यार, ये एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, पेयरिंग, आई ऑलवेज बिलीव ये सेंटर बैक का पेयरिंग है, काइंड ऑफ वर्क्स बेस्ट. दैट्स माय ऑब्जेक्टिव. एंड लेट्स सी, मे बी मैं दोनों फर्स्ट टू वर्ड्स को मिक्स कर दूं, वो भी हो सकता है. चलो, मार्किनियोस किम्पेम्बे, नॉट अ बैड शाउट, लेकिन किम्पेम्बे काफी क्वेश्चन मार्क है ना. और मार्किनियोस व्हाइल ही सुपर्ब, लास्ट 12 मंथ इतने अच्छे नहीं गए कंपैरेटिवली इन द चैंपियंस लीग एज वेल. पाउ टोरेस एंड डिलिक्ट, डॉटमंड डिफेंडर. नहीं यार, डॉटमंड काफी आ गई है. डिलेक्ट, पॉट टोरेस एंड एल्बियोल. भैया बायन एनीवेज डोंट नीड डिफेंडर्स. किम्पेम्बे पेयरिंग होना जरूरी है भाई, मतलब वही है, सेंटर बैक का पेयरिंग काइंड ऑफ वर्क्स बेटर. मैंने डाल दिया, लेकिन हाँ, नाउ दैट आप लोग सब बोल रहे हो, आई विल मिक्स द फर्स्ट टू वोट्स का बेस्ट काइंड ऑफ ऑप्शन. भैया योर टॉप 4 वर्ल्ड कप प्रेडिक्शंस आएंगे भाई, प्लीज स्पैम मत करिए, लाइक कर दीजिए. मार्किनियोस एंड किम्पेम्बे. अच्छा, फोइथ बास्टोनी शुड आल्सो बी एट लेफ्ट बैक. This is too hard. Timber and Delict. Honorable mention, Lisandro and Timber. Yes, absolutely. Marquinhos and Kimpembe. इतने सारे votes. Skriniar, Tomori and Bremer. Okay, instead of having centre back the same club, could we shuffle? चलो, we'll shuffle. ट्रॉफी का पैरामीटर क्या है? पैरामीटर ये है जो आप देख रहे हैं. ठीक है. अंकित भाई, पेयरिंग में तो वरान और मैग्वायर भी आते हैं. वरान और मैग्वायर में फर्क देखो. इसलिए मैंने नहीं डाला यार, विवान उसको नहीं डाला है साथ में. लेकिन लिखते कितने वोट्स है भाई? 30 वोट कर दीजिए सब लोग. 30 वोट्स इज व्हेन वी विल एंड. आई एम लुकिंग एट मे बी 3 more वोट्स कमिंग इन, लेकिन हाँ, होपफुली 7 more लाइक्स कमिंग इन एज वेल, क्योंकि हम चाह रहे हैं 80 लाइक्स टू द स्ट्रीम इन द नेक्स्ट मिनट अलॉन्ग विद 30 वोट्स आइडियली. लेकिन क्लियर विनर है, क्लियर विनर. अच्छा, अगर होता है ना किएलिनी और बुनुची को मे बी अगर मिलते हैं 35% वोट्स, तब मैं फिर भी कंसिडर करता. लेकिन खाली 20% वोट मिले, और यहाँ पर आए हैं 50% वोट अलाबा और मिलिटाओ. तो यार, जनता जनार्दन, मैं जनता के साथ जाना चाहूंगा. दैट्स द सिंपल पॉइंट. लेकिन हाँ, टोमोरी एंड रोमाग्योली वर आल्सो ग्रेट, बट टोमोरी हैज प्लेड इन प्रीमियर लीग. भैया अपने रामोस रामोस भाई कहाँ खेला है. मेरा वोट दिल पे पत्थर रखकर अलाबा और मिलिटाओ को गया. लाइक द स्ट्रीम, सब्सक्राइब टू द चैनल गाइस. तन्मय चेल्सी ब्रदर सेइंग इट, बट हाँ, लेट मी पुट माय वोट नाउ. ठीक है, तो मेरा वोट जाता है बेस्ट सेंटर हाफ जो नहीं खेले हैं इन द प्रीमियर लीग. मैं यहाँ पर थोड़ा सा सरप्राइज करने वाला हूँ आप लोग को. आई एम नॉट गोइंग टू पिक अलाबा एंड मिलिटाओ. यस, यू हर्ड दैट राइट. लेकिन आई थिंक द गाय हु वाज प्रॉब्ली मोर कंसिस्टेंट, आप देखो, फॉर हिज क्लब एज वेल एज द कंट्री, वाज प्रोबेबली दिस गाय जो नहीं खेला है. It's coming home, it's going Rome, it's going Rome. He was captain of that team, remember. Bonucci has to be in there मेरे लिए for the Euros. Yes, हगा था in the World Cup qualifications, but Bonucci deserves it. And of course, आपने अगर पिक किया है, वोट में टाइम दिया 30 वोट्स, एक तो पिक करना ही पड़ेगा. अलाबा या मिलिटाओ. लास्ट 15 मंथ्स में द फैक्ट क्या, अलाबा नए टीम में खेल सकता है. बाद में क्रोएशिया का बढ़िया चांस, लेकिन नहीं, कॉर्नर हो गया. अलाबा को देना पड़ेगा, नहीं, अलाबा को देना पड़ेगा, क्योंकि मिलिटाओ का आई थिंक पहले खेले हुए हैं इन रियल मैड्रिड. आई वाज मोर इंप्रेस्ड लास्ट सीजन व्हेन वी प्लेड रियल मैड्रिड विद मिलिटाओ देन दिस सीजन. आई वाज मोर इंप्रेस्ड विद अलाबा. डिस्पाइट वो इंजरीज, ही हैज काइंड ऑफ कम अप द रैंक्स. तो व्हाट डू यू थिंक? फेयर इनफ. सो वी हैव एज ऑफ नाउ पिक्ड 2 रियल मैड्रिड प्लेयर्स. ठीक है, हाँ, चलो 2 रियल मैड्रिड मैक्सिमम नहीं करते, विल कीप 3. ठीक है, मेंडी, अलाबा. लेकिन काफी लोग ने बताया था किम्पेम्बे. यार, किम्पेम्बे इज नॉट अप टू द मार्क. मार्किनियोस डेफिनेटली इन द शाउट, लेकिन अगेन बोनुची यार यूरो जीता था, प्लस ही वाज एवर प्रेजेंट राइट फॉर यूवेंटस, तो इसलिए मैं बोनुची को पिक किया हूं. बोनुची, अलाबा, मेंडी एंड मैग्निया. दिस इज बेसिकली द 11 टिल नाउ. आई डोंट नो, व्हाट डू यू ऑल थिंक? मेजॉरिटी मैड्रिड के प्लेयर्स होने वाले हैं यार, इसलिए मैं 3 मैक्सिमम प्लेयर्स करने वाला हूं. थर्ड प्लेयर ऑब्वियस है, लेकिन थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं क्या? शुड वी चेंज द सेंटर हाफ? पीपल, आर यू ओके? आई नो हमने सब वोट किया है, लेकिन आर यू ओके इफ आई गो विद द विद द डिफरेंट नेम जो नहीं था ऑप्शंस में?
Are you okay with that? मैं आपको सिर्फ पूछ रहा हूँ यहाँ पर, हाँ, अगर मैं ये डालूं तो व्हाट अबाउट दिस, बिकॉज रियल मैड्रिड से काफी प्लेयर्स होने वाले हैं ना, वी रियली वांट टू मोर प्लेयर्स यहाँ पर. बढ़िया फ्रांस का गोल, फ्रांस का गोल, एड्रियन राबियो विद ब्रिलियंट गोल, लेफ्ट फुटेड फिनिश. और मे बी लेफ्ट साइड जो खेलते थे यूवेंटस के लिए पूरे सीजन में, जो एलेग्री फॉर सम स्ट्रेंज रीजन यूज्ड टू प्ले विद लेफ्ट विंग, फाइनली हैज कम टू फ्रूशन. डीडियर डेशॉम्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल स्कोर किया नेशंस लीग में. एड्रियन राबियो बहुत ही काइंड ऑफ ड्रॉस मैच में फाइनली एक बॉल आई, बढ़िया पास था. इफ आई एम नॉट रॉन्ग वाज इट येडर जिन्होंने पास किया था, लेकिन अच्छा पास. और रन था ऑफ कोर्स बाय राबियो हिमसेल्फ, फिनिशिंग ऑफ द लेफ्ट. ब्रिलियंट फिनिश, दैट नाइस फिनिश. फ्रांस वन अवे टू क्रोएशिया. अब देखते हैं भाई, अटैकिंग फुटबॉल देखने को मिलेगा, अभी मजा आएगा थोड़ा गेम में. लेकिन पीपल, व्हाट अबाउट द सेंटर हाफ? इंस्टेड ऑफ पुटिंग David Alaba, what do you think? मतलब should we go for some different name like a Marquinhos? I think Marquinhos, the fact कि Kimpembe next खेलते हैं काफी unfair है. Would that be cheating by Ankit or would that be fine? आप बोलो. मतलब again, I would like to put 3 Real Madrid players at max. That is one of the things, or 3 players from a different club for each club, right? Vinny, Modric, Benzema, exactly. So there are a lot of options from there. That's a right back to Hakimi ही आएगा. Well, let's see. भैया राइट बैक नहीं हो पाएगा. इंग्लैंड इज राइट बैक FC. हबीबी हकीमी मैन, हकीमी हैज टू बी देयर. मतलब इसलिए राइट बैक के ऑप्शन भी नहीं दिया मैंने एक्चुअली, टू बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट. इट हैज टू बी डानी ऑलवेज राइट बैक. उससे बेटर कोई एक्सपीरियंस, वेल अगेन ऑल टाइम फुटबॉल क्रिक्स मे बी, बट 15 महीनों के फॉर्म के हिसाब से हम पिक कर रहे हैं, राइट? You cannot keep out exactly. So that's why I've kept out David Alaba, unfortunately. Experience mattered in UCL. Carvalho 1/5, fair enough. Bhaiya, exactly overrated. Okay, people, what do you think? अगर मैं कोई X factor डालूं सेंटर बैक में instead of Alaba, should it be Marquinhos? What about right back James Tavernier? What about James Tavernier? अच्छा, यहाँ पर और आ रहे ऑप्शंस. लेट्स सी. यहाँ पर एंड कर रहा हूँ पोल ऑन द सेंटर बैक्स. तो सेंटर बैक्स यहाँ पर यार, Chiellini, the only reason being he's not been the player that he was, right? Bastoni again, वो बैक फोर में इतना टेस्टेड नहीं है, that's why हम वो नहीं कर रहे. Denzel Dumfries, brilliant shout. तो यहाँ पर पोल करना जरूरी हो गया है. People have heard me, looks like the best right back in the world in last 15 months not played in EPL. ठीक है, तो ये ऑप्शंस अगेन. बेंजामिन पावर्ड नहीं, आई डोंट नो. डेफिनेटली हकीमी हैज टू बी वन, लेकिन आई थिंक आई विल पुट डेंजल डमफ्रीज एज वन ऑप्शन एज वेल. ठीक है, हु एल्स? आई थिंक जेम्स टैवर्नियर डेफिनेटली डिजर्व करता है. आई थिंक फॉर द रीजन is being that he won there almost come on Europa, and he was the highest scorer and the captain for Rangers. So James Tavernier has to be there. Shout out to Calabria, fair enough. Lucas Vazquez, Dumfries भी है interesting option. Yes, Carvajal is an option. Or corner right back option. I think let's put in Carvajal. Yeah, to be very honest, Dani Alves, yeah, बहुत ही अच्छा किए considering his age. But let's be honest. लेकिन हाँ, लेट्स यार, बहुत अगर रियल मैड्रिड प्लेयर्स, तो अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं डाल रहा. सॉरी रियल मैड्रिड फैंस, लेकिन नथिंग अगेंस्ट यू ऑल. रूल अपना गेम का ये कि 3 प्लेयर्स होंगे. कम ऑन यार, ऑलरेडी एक हो गया. वी नो दैट मिडफील्ड अटैक में 2 इजीली आएंगे रियल मैड्रिड के. दैट इज द ओनली रीजन. तो यार यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ सेंट्रल मिडफील्ड में अभी आए नहीं अभी तक. हकीमी, डमफ्रीज डेफिनेटली आर ऑप्शंस, एंड मैंने डाला. पोल इज रेडी पीपल, लेट्स गेट इन योर वोट्स एज द मैच गोज ऑन. 55 मिनट्स, Croatia 0, France 1. लग रहा है अभी फ्रांस जीतेगी. एंड लेट्स सी सेकंड हाफ में. आई वाज होपिंग कि बेंजेमा विल कम ऑन, बट लुकिंग एट द सिचुएशन गेम का, मुझे नहीं लगता बेंजेमा आएंगे. मतलब आई माइट बी रॉन्ग, बट अगेन लेट्स सी हाउ दे डू. लेट्स सी. नॉट 3 और 5 कर दो, 5 बहुत हो जाते हैं भैया. लाइक कम ऑन, इतने सारे क्लब्स है वर्ल्ड में, 3 ही बहुत है भाई. 11 में से 3 स्पॉट दे ना रियल मैड्रिड को, और बाकी क्लब्स को भी, यू नो, जस्ट नॉट रियल मैड्रिड. मे बी विलारियल, जस्ट सेइंग. ओके, ये फेब्रिशियो गोल, फेब्रिशियो पागल हो गया है 4 दिन से. सेम ट्वीट. हाँ एग्जैक्टली मैन, मतलब मैं तो तंग आ गया, इसलिए मैं बोला ट्रांसफर क्यों नहीं करते. फुटबॉल क्रिक्स ने बहुत ही अच्छा आइडिया दिया था. लेट्स डू दिस अलोंग विद द वॉच अलोंग. व्हाई नॉट प्लेस फॉर डानी सबायोस? वो आएगा मिडफील्ड में, लाइक आई सेड. व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ पुलिसिक? चलो, आई विल कम टू दैट क्वेश्चन फॉर श्योर. लॉयल चेल्सी,
लेकिन द फ्यूचर इज गुड मैन, ही इज वांटेड नाउ ऑल ऑफ अ सडन. Marquinhos was terrible in the decisive away leg against Real Madrid. Won't judge him on league and success. चलो, तो लग रहा है मुझे सेंटर बैक से लोग अग्री नहीं कर रहे मेरे सेंटर बैक से. तो सेकंड ऑप्शन कौन था सेंटर बैक में? इट हैज टू बी, वाज इट कियलिनी? Was it really Chiellini? Come on, अंकित, यूरोपियन चैंपियन है, एटलीस्ट 4 तो देना चाहिए. चलो देखते हैं भाई, चलो देखते हैं. फिर नॉट एबल टू फाइंड, बट एटलीस्ट भैया ऐसे तो फिर विनी बेंजेमा नहीं आ पाएंगे. विनी बेंजेमा आएंगे मैं डेफिनेटली आना पाएंगे यार, इसलिए मतलब आई वांट टू गिव देम स्पेस. और 3 फ्रॉम वन सिंगल क्लब थोड़ा इंटरेस्टिंग कर देते, नहीं तो बहुत इजी होगा यार. यू विल फाइंड, यू विल ऑब्वियसली पिक द चैंपियंस लीग विनर्स यार. कम ऑन, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट. लेकिन यहाँ पर कितने वोट्स आए? चलो 13 वोट्स आए. होपफुली वी कैन डबल नंबर ऑफ वोट्स. यहाँ पर अच्छा क्रॉस क्रोएशिया का, लेकिन गेंडूजी ट्राइंग डिफेंसिव हेडर, नॉट सो गुड, लेकिन हाँ फाइनली डिफेंड. चलो मैं यहाँ पर वोट देख रहा हूँ कितने आ रहे हैं. तो डानी ऑलवेज नॉट गेटिंग अ वोट. आर यू सीरियस पीपल? कम ऑन. Dani Alves surely deserves at least some votes. मतलब उसने actually बचाया सीजन बारसा का, coming on a free. नहीं, don't you think so? लेकिन again, I can understand overall in the world he's not the best apart from the Premier League in the last 15 months. Fair enough. लेकिन I think Denzel Dumfries can be the option apart from James Tavernier as well to compete with the Hakimi. The Hakimi will be obvious, लेकिन Denzel Dumfries obviously deserves a shout out. नहीं? Let's see. यहाँ पर जेम्स टावर्नियर गेटिंग, मैं एक्सपेक्टिंग क्या था इतने सारे वोट्स मिलेंगे उनको, लेकिन मिल रहा है भाई, जेम्स टावर्नियर को मिल रहे हैं. तो आई वुड से लाइक पीपल हैव फॉलोड यूरोपा लीग क्लोजली दिस टाइम अराउंड. लुक्स लाइक एब्सोल्युटली. लेकिन यार ऑलमोस्ट 25% है डेंजिल डम्फ्रीज, 40% है हकीमी, जेम्स टावर्नियर 29% और डानी एल्वेस 6%. क्या लगता है, मतलब अभी एंड हो रहा है, मैं यहाँ पर मेरा वोट दे देता हूँ. ठीक है, मेरा वोट जाएगा राइट बैक. मैं तो काइंड ऑफ आई गेव इट अवे इन द बिगिनिंग, बट आई थिंक हकीमी हैज टू गेट इट. अगेन आप बोलोगे मार्किनियस को क्यों पिक किया है, क्योंकि पीएसजी से है. तो लेट्स एक्चुअली चेंज दैट, क्योंकि मुझे लग रहा था कि आप लोग अग्री करोगे उसके लिए, लेकिन लुक्स लाइक यू हैव नॉट अग्रीड. तो यहाँ पर एक जन जो नहीं था इन बट हु नेवर प्लेड इन प्रीमियर लीग, राइट? तो आई डोंट नो, मे बी एक एक्स फैक्टर में डालूं लास्ट 15 महीनों में समवन हु हैज बीन बेस्ट. हाउ अबाउट निकोलस सूले? निकोलस सूले नहीं? एनीवन आउट देयर? निकोलस सूले? और आप बोलोगे नहीं यार, इट्स अनफेयर, यू हैव टू डेफिनेटली पुट Chiellini because the legend he is. So Chiellini, Bonucci, again you're picking to Juventus players, but do they really deserve it? Maybe. Or on the other hand, मैं बोलूं, what about this one? I think this one people will agree. While you're picking the right back, I think ये वाला I'm pretty sure आप agree करोगे. And this one also garnered a lot of comments, लेकिन again votes में नहीं. What do you think? Fair enough? Good. This one I think सब लोग agree करेंगे. Skriniar and Bonucci, along with Bendy and Hakimi and Magnian. तो ये अपना डिफेंडर्स का जो टोली है वो रेडी है. लेट्स सी. जोशुआ किमिक राइट बैक ऑप्शन मिडफील्ड में आने से रहा. आई वाज होपिंग इन मिडफील्ड. राइट बैक तो नहीं आएगा भाई, वो ज्यादा मिडफील्ड में खेला है लास्ट फ्यू इयर्स में. तो यू कैन से फर्नांडो टोरेस टू फेरान और पीके पुयोल से मार्टिनेज गार्सिया. वेल डोंट वरी यार आदित्य, इट्स अ फेज, लेकिन इंप्रूव कर रही है स्पेन की टीम. पाउ टोरेस पे खराबी है. हाँ, व्हाट अबाउट पाउ टोरेस? व्हाट इफ वी हैड पिक पाउ टोरेस? लेकिन वो ये ला लीगा में पाउ टोरेस हैज ही बीन दैट गुड वर्सेस स्क्रीनियर? यस, स्क्रीनियर इज द बेस्ट ऑप्शन. नो सूले. या एग्जैक्टली, मतलब आई एग्री. पाउ टोरेस, द फैक्ट है ला लीगा में इतना अच्छा नहीं किए कंपेयर टू द चैंपियंस लीग. आई एम लुकिंग एट बेसिकली week in week out for the last 15 months. Plus I think Skriniar, for what I remember, उनके national team के लिए काफी अच्छा किए थे. Just that they just missed out on World Cup qualification. Please consider Milinkovic Savic. Okay, interesting. Modric has played for Tottenham. Exactly. Modric is not an option. Good one there. Demonsters. Originally Madrid का है. चलो डाल दिया Madrid का, डाल दिया Hakimi. Skriniar है Bastoni inform. Yes, absolutely. I've heard you, Vivan. कोई नहीं, मैड्रिड 11 हमारे ही रख लो ना. स्क्रीनियर इन फॉर मार्किनियोस. चलो हो गया, सब लोग स्क्रीनियर इन बोल रहे थे तो मैंने कर दिया स्क्रीनियर इन. और यहाँ पर राइट बैक, और यहाँ पर ग्रीजमैन कमिंग ऑन पीपल. ग्रीजमैन कमिंग ऑन. बेन येडर फाइनली मूविंग ऑफ.
Uh, that was kind of expected also. Like in Ben Yedder with a decent assist, decent performance, nothing out of the world, absolutely. Theo is greater than Wendy for me. Rest is fine. Yeah, Theo na defensively or in terms of basically just take क्या बोलते हैं in terms of temperament थोड़ा सा मुझे question mark लगा है in the last few months. But again, maybe अगर Real Madrid से ज़्यादा players आए, I might just put him. लेकिन come on, defense पे एक Real Madrid को होना चाहिए नहीं. लेकिन यहाँ पर ना what if I change left back as well? मैं काफी change कर रहा हूँ, cheating कर रहा हूँ because इतने सारे votes आए थे. I cannot. Should I pick David Alaba और Mendy? ये आप बता दो मुझे. ये आप अगर चाहो तो चेंज कर सकता हूँ. चलो मिड आते हैं. We will be here when we'll have 1 million. अरे भाई, what a comment man, what a comment. By the way, Pasalic coming on, ex-Chelsea player who plays for Atalanta. Orsic as well coming on. Two bright players for me, absolutely. Danilo. नहीं यार, Danilo नहीं, absolutely. चलो, यहाँ पर मैं end कर रहा हूँ poll for the right back. I was hoping for 25 votes, but looks like 24 votes में अटक गया है. तो कोई नहीं. जल्दी से कोई वोट नहीं किया तो कर लीजिए राइट बैक का वोट. मैं मिडफील्ड में आने वाला हूँ. मिडफील्ड के आप ऑप्शन दीजिए. Who is the best CDM in the world who has not played in Premier League in the last 15 months? Who is your option? Hakimi by far is the winner in right back. तो चलो, I will not going to change here. Casemiro definitely is in the shout. Definitely. Last 15 months में जो फॉर्म रखे हैं for Brazil as well as for Real Madrid, Casemiro definitely is an option. Casemiro clear. Modric nahi. Modric has played for Tottenham, remember, so we are not considering Modric. Casemiro anyhow best CDM. Fair enough. लेकिन वही है Real Madrid. Why not put Diego Godin as centre back option plus defense की बात हुई, एटलेटिको मैड्रिड की बात ना हो. मैंने डाला था लेफ्ट बैक लोडी, लेकिन काफी लोगों ने कमेंट नहीं डाला था. मैंने कमेंट में डाला था लोडी, लेकिन जो 4 सबसे ज्यादा कमेंट आता है ना फुटबॉल क्रिक्स, मैंने वो डाला एज ऑप्शंस. कैसेमिरो क्लियर है. किमिक, आई वाज टेलिंग किमिक एग्जैक्टली मैन. I think Kimmich, I think again people, Casemiro has been the best, लेकिन I think Kimmich होना चाहिए टीम में. Don't you think so? Let me know. Kimmich not being here, I don't know यार. Again best. चलो डाल देते, पोले डाल देते वापस. Best CDM in last 15 months with club and country, not played in EPL ever. ठीक है. So options are Kimmich of course. Options are Casemiro of course. और कौन है? Maybe Bellingham. We wouldn't really call him a CDM coach, लेकिन you know what I mean, right? कर सकते हैं. Bellingham has not really played in the Premier League. Has he played in the Premier League? No, not in the highest level. तो Premier League में नहीं खेले. Bellingham is an option. What about और कौन option थे यार? I don't know. Maybe नहीं, 2 बायन से नहीं डालेंगे. एक और ऑप्शन देखते हैं. बुस्केट्स. हाँ, बुस्केट्स. Kimmich injured था, yes, लेकिन 15 महीनों में, मैं 15 months बोल रहा हूँ. 15 months is a long time, come on. And that includes by towards the end of last season, starting from the Euros as well. Gravenberch is not a CDM. Gravenberch is more like a number 8 in this formation. वो CDM नहीं है. लेकिन हाँ, Kimmich definitely. What about Frankie? Frankie is also, I would put in number 8 option, not in CDM. लेकिन I think एक option जो निकल के आया था, obviously Brozovic certainly. Again, Kessie is not a pure CDM. I would not term him a pure CDM. Chouameni, why not? Why not Chouameni? I think Bellingham को हटा देते, डालते हैं Busquets को and Brozovic को, क्योंकि Brozovic का काफी अच्छा सीजन रहा है. मतलब arguably one of the players of Inter Milan in this season. ठीक है. Brozovic. और by the way, मैं मिलान से काफी players को नहीं डाल रहा हूँ interestingly, लेकिन हाँ, maybe left back में change कर दूँ to Theo Hernandez. I'm just thinking about it. लेकिन हाँ, let's see. यहाँ मैंने 4 options डाले हैं people. Let's put in your votes. Everyone, let's put in your votes. बहुत options है. अगर basically Casemiro आते हैं, तो मैं बोल रहा हूँ left back में Theo Hernandez को डाल रहा हूँ. वो change कर रहा हूँ. ठीक है? That is the caveat. I hope that's fair. Busquets, Verratti again not a pure CDM. Paredes, yes, good shout. लेकिन again not as good as the other 3 I put in the option. Marquinhos को भी डाल दो. He can play there, but again he's more of a centre half. Not a notification that Al Khalifi announced Mourinho as a manager in press conference.
नहीं यार, आई डोंट थिंक सो. बुस्केट्स, ब्रोजोविच, जर्मनी. अगर ये सच है तो मतलब आई माइट बी काइंड ऑफ क्लिप्ड हियर, लेकिन आई एम जस्ट सेइंग. Kamara, Zakaria, nahi, come on. Best ever in not to play in the Premier League with the form in the last 15 months, nahi. Busquets, Brozovic, Germany. Germany should have been an option. Germany should have been an option. मैं miss कर दिया हूँ. लेकिन वही है. Has he been that level? Come on. He is one of the most promising CDMs. लेकिन I don't think he's been the Busquets, Brozovic, Casemiro and Kimmich level. I'm just being very honest. यहाँ पर मैं खुद जर्मनी का फैन हूँ. ये बोल रहे चीटिंग. नहीं यार, तो वही है मतलब. ओके, whom do you want? Do you want a Casemiro, Vinicius or Benzema, or do you want Mendy? आप चुनो यार. चेंज लेफ्ट बैक, वरना विनी की जगह एम्बापे डालना पड़ेगा. Oh my God, बहुत ही funny यार आप लोग चैट में. But I'm hoping to get at least 25 votes. People, put in your votes for the best CDM in the last 15 months who has never played in the Premier League. ठीक है, जो भी लेट ज्वाइन किया यार, लाइक करना मत भूलना. 100 लाइक्स कर देते हैं. कम ऑन, लेट्स गेट टू 100 लाइक्स. वी आर ऑन 67 मिनट्स एंड 30 सेकंड्स ऑफ द मैच. क्रोएशिया 0, फ्रांस 1. और यहाँ पर बहुत ही अच्छा हमारा चल रहा है वोटिंग. और मैं बहुत ही शॉक्ड हूँ, किमी को खाली 12% वोट्स मिले अभी तक. Are you serious? Man, you're talking about Kimmich. कैसेमिरो को डालना पड़ेगा क्या इस रेट से? मतलब आई डोंट नो मैन, आई एम काइंड ऑफ वेरी सरप्राइज्ड. कैसेमिरो इज ब्रिलियंट, आई एम नॉट सेइंग नो, लेकिन आई वाज रियली थिंकिंग कि ब्रोजोविच और किमिक को काफी वोट्स मिलेंगे, और ब्रोजोविच को किमिक को सबसे कम मिले. भाई मतलब आप सच में अगर इंटर मिलान को देखे हो ना, ही हैज बीन कैरिंग इंटर मिलान मिडफील्ड एट टाइम्स. दैट्स ब्रोजोविच. लेकिन अगेन मतलब नथिंग अगेंस्ट योर वोट्स, ऑफ कोर्स कैसेमिरो इज सुपर. लेकिन अगेन वुड यू नॉट से दैट कैसेमिरो का लास्ट 3-4 महीना थोड़ा सा इसी रहा है? वो थोड़ा सा डिबेट आप कर सकते हो, नहीं? आई डोंट नो. मतलब अगेन आई एम लुकिंग एट द नंबर ऑफ वोट्स, और 25 वोट्स हो जाए तो आई विल ट्राई एंड एंड इट. बाय द वे, क्रोएशिया गोइंग फुल अटैक, क्रामारिच कमिंग ऑन. बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है अभी मैच. लेट्स सी. मैं पानी पीने दो थोड़ा सा. बाय द वे, लाइक्स कर दो. कितने लाइक्स हुए देख रहे हैं? और करीबन 25 वोट्स भी हो गए. चलो, तो करीबन 25 वोट्स हो गए. होपफुली विल गेट कपल मोर वोट्स एंड कपल मोर लाइक्स, और वील एंड इट. लेकिन हाँ, बुस्केट्स गेटिंग द मोस्ट वोट्स, मतलब पीपल वांटिंग फर्लैंड मेंडी टू स्टे लेफ्ट बैक फॉर दिस टीम. भाई साहब. I can't believe it. Busquets getting the vote again, legend भाई. लेकिन come on, last 15 months के फॉर्म में you're picking Busquets over Brozovic, over Kimmich and over Casemiro. Come on people, get in the votes. मैं टाइम दे रहा हूँ. मैं और 2 मिनट दे रहा हूँ. Get in the votes. Let's see. I am telling you it's 2-1 for Croatia win with late winner. Okay, let's see. शायद I won't mind that. मतलब इतने सारे अटैकर्स है पिच पर, तो I won't mind that. बिल्कुल नहीं, उसका कोई कंपटीशन नहीं है. कैसेमिरो क्लियर विनर अगेन यार भाई. जनता जनार्दन. तो मैं तो यार जनता जनार्दन के साथ जाना चाहूंगा. फ्रॉड वोटिंग. हाउ बुस्केट्स. पीपल फॉलो लालिगा मोर, तो लालिगा के प्लेयर्स. अरे लेकिन कैसेमिरो भी लालिगा में है. सेरिया में आई एम होपिंग दैट पीपल वुड वोट फॉर ब्रोजोविच. मैं सच में बोलूं, अरे व्हाट अ शॉट मैन, व्हाट अ शॉट. क्रोएशिया रियली अटैकिंग. शायद इज प्रॉब्ली राइट. हाँ, क्रोएशिया मस्त अटैक करते हुए, और यहाँ पर मैग्निया विद अ ब्रिलियंट सेव. हाँ, गुड हाइट, लेकिन अगेन काफी अच्छा सेव था फॉर मी. And of course that is what Magnan is there in the team. Biscuits only cause हमको विनी और बेंजीमा चाहिए. ओके यार, लेकिन यार आप उसके लिए भी आप जा सकते थे. किमिक के लिए आप, ब्रोजोविच के लिए भी जा सकते थे. Casemiro won UCL this year. I'm Liverpool fan. Guendouzi. Chelsea says Guendouzi. भाई साहब यार, जस्ट लाइक रियली फनी मैन. मतलब लाइक मजा आ रहा है मुझे. लेकिन हाँ यार, 30 वोट्स कर दीजिए और 85 लाइक्स कर दीजिए इन द नेक्स्ट मिनट. ठीक है, लेट्स गेट टू 85 लाइक्स एंड 30 वोट्स, एंड क्लोज टू 30 वोट्स हो जाएंगे तो विल स्टॉप. लेकिन यार द फैक्ट दैट बुस्केट्स हैज एक्चुअली गॉट, और हाँ मे बी ऐसे बोल सकते हैं, पीपल वुड हैव लव टू सी बुस्केट्स इन द प्रीमियर लीग वर्सेस अ कैसेमिरो, इसलिए आ रहे वोट्स. मैं तो ये बोलना चाहूंगा. Let's see, man. I don't know, man. Well, again, Todibo is, I don't know, he's a very young centre back from what I know. लेकिन again, मैंने इतना closely follow नहीं किया, to be very honest.
maybe if others say, I might put Todibo, or I might change to Theo Hernandez at left back. if Casemiro aate. Busquets fits perfectly in the formation. I would always give shout out to Esen Alvarez. Fair enough. Busquets is a legend, but इस टीम में नहीं होना चाहिए भाई. लेकिन जनता जनार्दन यार, मैं आपके वोट पिक नहीं करूँ तो थोड़ा चीटिंग हो जाएगा नहीं. तो अगेन मैं देख रहा हूँ काफी वोट्स अभी रुक गए और वोट्स नहीं आ रहे. उस मुताबिक एज थिंग्स स्टैंड, अनलेस यू वांट टू चेंज द वोट इन द नेक्स्ट मिनट, आप करो. क्योंकि अभी एज थिंग्स स्टैंड इट इज सर्जियो बुस्केट्स. Fellaini is the best centre-back. CDM had a brilliant season in China, don't ignore, but he has played in the Premier League. We are counting people who have never played in the Premier League. ठीक है. और उससे एक गलती हुई थी. I just remembered. I had initially put PK, but PK ने खेला है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए. मैं भूल गया था. Votes more on emotions. हाँ, but वही है. Maybe they wanted to see Busquets in the Premier League. Put it that way. No harm, यार. Absolutely, आपकी मर्जी. Again, people are joining in. Best current 11 not to play in EPL this century. ऑफ कोर्स हम मैच भी देख रहे हैं. अभी बढ़िया अटैक करी क्रोएशिया, लेकिन अगेन फ्रांस कीपिंग सब पोजीशन, थोड़ा कंट्रोल रखते हुए. एंड आई एम गेसिंग कि फ्रांस ले लेगी गेम. लेकिन अगेन मेरा प्रेडिक्शन तो था हाई स्कोरिंग ड्रॉ. फर्स्ट टाइम मगवायर इज नॉट टेकन इन प्लेइंग 11. एक काम करो, सारे मिडफील्ड सारे मैड्रिड प्लेयर्स डाल दो, सब खुश होंगे. नहीं यार, वो तो एक कैच है ना. वी आर ओनली पिकिंग 3 प्लेयर्स फ्रॉम अ सर्टेन क्लब मैक्स. Cambodia, what a game we have against City and United. Zaniolo, Pessina, and Gavi now. Okay, Busquets, this voting is more fraud than UEFA. Brozovic, man, exactly, man. Brozovic has got to be. मुझे लग रहा था Brozovic या किमिक आएंगे यहाँ पर, लेकिन I have Busquets. चलो, let's move on to attacking midfield क्योंकि 30 वोट्स आ गए. और भाई साहब 50% वोट्स बुस्केट्स को. भाई रिमेनिंग वोट थोड़ा सीरियसली दे दीजिएगा. आई एम प्रीटी श्योर पीपल आर लाइक मोर लाइक फैंस ऑफ बुस्केट्स, आई एम गेसिंग, और स्पेनिश फैंस इसलिए डाले हैं. लेकिन हाँ, लेजेंड. और इफ यू फील दैट ही हैज कैरीड बार्सिलोना मिडफील्ड, मे बी यू फील दैट. और फैक्ट कि बुस्केट्स आ गए, अभी थोड़ा डिफिकल्ट है गावी को आना. Zaniolo, यार, he is the best top 4 midfielders or top 8 midfielders. I don't think so, man. I don't think so. Who's not played in the Premier League? I don't know. मैच से ज्यादा इंटरेस्टिंग आपकी लाइव है. अरे भाई, मींस अ लॉट. लेकिन हाँ, मैं खुद यार बोर हो रहा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो फुटबॉल क्रीक्स गिव मी द आइडिया. बिग अप टू फुटबॉल क्रीक्स. Zaniolo कैसा खेला लास्ट सीजन? ब्रिलियंट खेला, लेकिन कंसिस्टेंट नहीं था. इसीलिए रोमा हैज नॉट बीन इन द हाईएस्ट पेडेस्टल ऑफ सीरी आ. तो Zaniolo ब्रिलियंट इन यूरोप, बहुत इंपॉर्टेंट मैच में काफी अच्छा किया है. ऑन स्किल लेवल सुपर्ब. लेकिन मैं बोलूंगा ही स्टिल गॉट कंसिस्टेंसी टू अचीव. फ्रैंकी फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन काफी याद है, ही वाज क्रिटिसाइज्ड. गावी, बरेला had a bad season. Barella had not a bad season, injured थे, लेकिन kind of mixed. I would say Brozovic was far better in midfield generally. Verratti's got a good shout. Llorente, okay. Joshua Kimmich at right back because Hakimi की defense का work rate is bakwas. But I cannot go against your 40% votes, man. Come on, that has to be the thing, right? Like in 50% votes of Busquets is the funniest thing that I've ever seen. As much as I like the guy, as much as I respect the guy, Verratti, yeah, Marcos Llorente are good shouts. Okay. ठीक है. यहाँ पर ना सेंट्रल मिडफील्ड में क्या ऑप्शंस है? पीपल हैव नॉट प्लेड इन द प्रीमियर लीग. यार, आई एम सरप्राइज नो वन सेड टोनी क्रूस, लेकिन 15 महीने के फॉर्म के हिसाब से जा रहे हैं. तो आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई टोनी क्रूस नहीं बोला जा रहा है, बिकॉज अगेन स्टीवन लैटर पार्ट ऑफ प्रीवियस सीजन ही वाजंट टू गुड. मॉडरिच इज नॉट एन ऑप्शन बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजन. वो खेला है इन द प्रीमियर लीग. हु एल्स? ऑब्वियसली आप बोलोगे गावी, पेड्री होने चाहिए, बट अगेन हैव दे डन कंसिस्टेंटली इनफ at that level to be the best in the world apart from the Premier League? I doubt it. तब बचा कौन? By the way, यहाँ क्रोएशिया गिफ्ट कर रही है बॉल. एंकू को गिफ्ट की है, और यहाँ ग्रीजमैन का शॉट, लेकिन नहीं. इजी सेव फॉर द क्रोएशियन गोलकीपर. तो और ऑप्शंस कौन बचते यार? बचते कौन है? वेराटी तो डेफिनेटली इन द शाउट है. तो यहाँ मैं बोलूंगा वेराटी काइंड ऑफ यू कैन से ऑलमोस्ट पिक्स हिमसेल्फ. क्या मार्को वेराटी? You have a second PSG player. Can you believe it? You have a second PSG player. Bellingham मैंने CDM में डाला था more. लेकिन again, Bellingham has he been best in the world in the top 4 midfielders? I don't think so. Cruz, possible. Pessina, no, not so consistent.
हु एल्स? क्रूज, काफी लोग बोल रहे हैं क्रूज। नहीं यार, क्रूज आई डिसएग्री विद क्रूज एक्चुअली। मतलब उनका आर्ग्यूबली रियल मैड्रिड का सबसे वीक लिंक क्रूज थे इन द लास्ट 15 महीने ना, तो दैट्स व्हाई आई एम नॉट पिकिंग क्रूज। और द फैक्ट दैट हम कैसेमीरो और मॉड्रिच को नहीं लिए तो क्रूज को कैसे लगता है? नो, मॉड्रिच वाजंट एप्लीकेबल, बट कैसेमीरो को नहीं लिए, तो आई डोंट थिंक क्रूज कम्स इन। Frankie is certainly an option, लेकिन Busquets you have picked. So would you like to pick Frankie as well? First 6 months में he was criticized a lot. Remember, he didn't do too well under Koeman as well. Remember that first 5 months में. Gavi again, मतलब has he been so consistent at that level for the club and country? Arguably yes, Gavi आप बोलोगे. Barella not really, Lorente not really, Zaniolo possibly. Zaniolo is an option. Zaniolo is an option, people. Goretzka. What about playing Kimmich at right mid? यार खेला है वो. What about playing Kimmich at right mid? Goretzka, he's not had a great season. Kimmich, I know, has been injured as well. But would you feel that at right mid or right central midfielder, Kimmich is not a bad option as well? Valverde, Musiala, Leon Goretzka, Dani Parejo, shout out, absolutely. Dani Parejo is a shout out. लेकिन भाई वो स्पेन के भी 11 में नहीं आएगा यार, मतलब ला लीगा के भी 11 में, तो आई डाउट इट. Musiala towards the end of the season, yes, but again, first 5 months, I'm not too sure. I think probably, let's be honest about it, we may have to pick Gavi. Gavi has to be the guy. मतलब मैं यहाँ पर पोल नहीं डाल रहा. डालू कि नहीं डालू पोल? पोल करो, चलो. लोग बोल रहे हैं पोल. पोल में मजा आ रहा है ज्यादा लोगों को, तो पोल करते हैं. तो बेस्ट यार वेराटी तो आना चाहिए. दैट एवरीवन अग्रीज. आई एम प्रीटी श्योर वेराटी के लिए पीपल अग्री. ठीक है. बेस्ट सेंट्रल मिडफील्डर, बेस्ट राइट सेंट्रल मिडफील्डर, नहीं सेंट्रल मिडफील्डर कर दो चलो. बेस्ट सेंट्रल मिडफील्डर और सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर इन लास्ट. बाय द वे, मॉडरिच गेटिंग सब. सुसिच कमिंग इन. क्या नाम है भाई? सुसिच. सॉरी, आई डोंट मीन दैट. बेस्ट कैब और सीएम इन लास्ट 15 months अपार्ट फ्रॉम ईपीएल. नेवर. हाँ भाई, अपार्ट फ्रॉम ईपीएल. चलो, तो ऑप्शन कौन है? ऑप्शन है आपके. किमिक was an option because he could play there as well. Bellingham was an option because he could play there as well. और कौन ऑप्शन था आपका? गावी डेफिनेटली इज एन ऑप्शन. एंड एक और ऑप्शन कौन डाले देखते हैं, मतलब कौन सा सबसे पॉपुलर ओपिनियन था यार. चोमनी फॉर मी द फिफ्थ नंबर पे आते. मैंने 4 ऑप्शन डाले थे, एंड आई हैड पुट बुस्केट्स, आई हैड पुट ब्रोजोविच, आई हैड पुट और किसको डाला था? ऑब्वियसली किमिक को डाला था, और ऑफ कोर्स कैसेमीरो को डाला था. बट स्ट्रेंजली प्लेजेंट सरप्राइज फॉर बार्सा फैंस, बहुत बुस्केट्स के वोट्स आ गए थे. वाल्वर्डे को डालते थे. चलो वाल्वर्डे को डाल देते हैं, बेचारा बहुत किया है, लेकिन वॉज ही 11 में इतना कंसिस्टेंटली? दैट इज द ओनली प्रॉब्लम ना. बेलिंगम, गावी और किमिक तो काफी खेले एज मच एज. हाँ, कैसी इज एन ऑप्शन. कैसी इज एन ऑप्शन. थैंक यू भाई. मैं टोनाली भी नहीं डालूंगा, कैसी को डालूंगा, बिकॉज यस, एक्चुअली एसी मिलान का कोई तो होना बनता है भाई. कम ऑन, 10 साल के बाद जीते सीरिया, तो एसी मिलान का कोई तो होना बनता है. कैसी भाई, कम ऑन, गेट इन कैसी. फ्रैंक कैसी, पीपल कम ऑन. और यस, मैंने नहीं डाला है फ्रैंकी डियोंग को, क्योंकि पहले 4-5 महीनों में ही वाज स्टिल एडजस्टिंग, ही वाज नॉट डूइंग दैट वेल. Tadic was a good option actually. Çalhanoğlu, no yaar, I think he doesn't create as much as what he should. मतलब set pieces में is main Çalhanoğlu का. Kessie is a brilliant shout, इसलिए मैंने ऐड किया. Valverde वही है, मतलब in the first few months he didn't start many games. Oh yeah, absolutely man. Leipzig, if I'm not wrong, he plays for. Brilliant as well. Camavinga और रोड्रिगो को सुपर सब रख लो. वही है, subs brilliant. Zaniolo, the fact कि यार इतना consistent नहीं रहे, इसलिए मैंने लास्ट में डाल दिया है अपने केसी को. Milinkovic Savic, big shout out definitely. लेकिन the fact is not that in the highest level, इसलिए यहाँ पर क्या VAR चेक हो रहा है कोई रीजन से. Tadic फ्रंट 3 अभी आते हैं, फ्रंट 3 में आते रुको. चालोनोग्लू नहीं, मिलिंकोविच साविच नहीं, बिकॉज वही है, दे हैवंट बीन टेस्टेड एट द वेरी हाईएस्ट लेवल, स्पेशली मिलिंकोविच साविच. चालोनोग्लू definitely shout out है, लेकिन मिलिंकोविच साविच I would rather rate him more than चालोनोग्लू even. Muller at Cam underrated, fair enough, लेकिन again the formation हम जो खेल रहे हैं वहां पर मुलर फिट नहीं बैठते I feel. यहाँ पर VAR चेक अभी तक चल रहा है. पेनल्टी है भाई. पेनल्टी मिल गई यार. ऑफसाइड.
ये क्या बोल रहा है? ऑफसाइड बोल रहा है, ऑफसाइड बोल रहा है, पेनल्टी बोल रहा है, पेनल्टी बोल दिया। Croatia get a penalty by the way. Sudden से all of a sudden, और my predictions are coming right again. माइक मैग्निया, जिसको मैंने इतना प्रशंसा किया था, he came out, he kind of lost the ball, और यहाँ पर नंबर 15 फ्रांस के देते हुए पेनल्टी टू द क्रोएशिया प्लेयर हु इज नंबर 15 मैन, वेरी वेरी वीक डिफेंडिंग। 15 नंबर कौन है भाई? ये तो वेबसाइट नंबर 15 अपडेट ही नहीं की। जॉनथन क्लॉस, अरे जॉनथन क्लॉस इज द गाय हु वाज लिंक्ड टू चेल्सी। क्या हो रहा है? रीस जेम्स गिविंग पेनल्टी, जॉनथन क्लॉस गिविंग पेनल्टी लॉन्स के प्लेयर। kind of strange anyway. तो भाई I hope the votes are getting in. League on कौन देखता है? फार्मर्स लीग, फैबियन रूइज, व्हाट अ सीजन यार। फैबियन रूइज गुड शाउट आउट, लेकिन वो सीडीएम के लिए होते हैं ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट। देखते हैं भाई, वी विल कम टू फ्रंट थ्री। पेनल्टी एब्सोल्युटली लुमानियो, लेट्स सी इफ माय प्रेडिक्शन कम्स राइट। अरे रुक, अरे यार माइक मैन्या पहले ही नीचे गिर गए, he committed too early. Why not Pau Torres over Skriniar, so underrated? भाई Pau Torres is brilliant, he's a big game player. My choice for Chelsea is Pau Torres क्योंकि वो लेफ्ट फुटेड है, लेकिन as an all-rounded defender I feel Skriniar had a better season here, simply put. ज्यादा कंसिस्टेंट थे। आप देखो Pau Torres in the league wasn't as effective as Skriniar was in the league for Inter. Just putting it out there. And of course Skriniar was very big for his country, almost got them to the World Cup. आप देखो जाकर क्या था क्वालिफिकेशन उनका। That's the only thing. मतलब 2 बार अटके थे यार पेनल्टी में लेकिन माइक मैग्निया कमिटेड टू अर्ली, आई फील। तो कोई नहीं, कोई खास फाउल नहीं था। वेल वो ये टेक्निकली फाउल, लेकिन यू कैन आर्ग्यू दैट एब्सोल्युटली, बट अगेन इट्स एट द एंड ऑफ द डे क्या है, लोकेटेली यार नहीं यार इतना अच्छा नहीं थे, ही वाज मोर वाज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ हिम। अभी देखते हैं वोट्स कितने हैं भाई। Just 12 votes in. People, get in your votes. Get in your votes. And this is the vote for the remaining spot in central midfield. जो कैंप पोजीशन भी आप बोल सकते हो। Who do you think had the best 15 months club and country performances put together? Let me see कैसे वोट जा रहे हैं। किमिक 50%। मैं सीडीएम में किमिक के लिए मांग रहा था वोट, तब तो आ नहीं रहे थे भाई सीरियसली दे दो सब लोग वोट्स, देखते क्या है। मतलब आई वाज होपिंग, इस बार सच में बोलूं तो आई वाज एक्चुअली होपिंग कि केसी को मिलेंगे ज्यादा वोट्स और गावी को मिलेंगे, लेकिन गावी और केसी को आर्ग्यूबली सबसे कम वोट्स मिल रहे हैं। पता नहीं सबसे ज्यादा, सबसे ऊपर रखना चाहिए क्या मुझे ऑप्शन में? प्रॉब्ली दैट इज द थिंग। अरे गंदा टैकल भाई किम्पेम्बे का, गंदा टैकल, गंदा टैकल। अच्छा 25% वोट मिले ऑलमोस्ट गावी को, नॉट बैड, दैट इज एक्चुअली क्वाइट स्ट्रॉन्ग कंसिडरिंग 4 चॉइसेस है। लेकिन सबसे ज्यादा वोट्स अभी तक कितने, मतलब अगेन 25 वोट्स हो जाएंगे तो मैं एंड करूंगा मोस्टली। होपफुली यू गाइस गेट इन द वोट्स, लेकिन आई एम होपिंग दैट मे बी एन एसी मिलान प्लेयर गेट्स इन। नहीं, आई वाज होपिंग दैट एन एसी मिलान प्लेयर गेट्स इन द टॉप 11, लेकिन अगेन they've done very badly in चैंपियंस लीग, तो मैं समझ सकता हूँ। ओके फेयर इनफ, ओके फेयर इनफ। नॉर्मली पूछ रहा हूँ विनी और सॉन फ्रॉम दिस सीजन। अरे वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। आई वुड स्टिल पिक विनी, आई वुड स्टिल पिक विनी। मतलब विनीशियस जूनियर, द वे ही हैज इंप्रूव्ड ओवर सॉन, वाज ऑलरेडी अ टेरिफिक प्लेयर। मे बी अनफेयर अगेंस्ट सॉन, लेकिन मैं बोलूंगा विनी यार। विनीशियस जूनियर द चेंज ऑफ पेस भाई, आई लव दैट। I am more of a fan of that compared to basically Son. I'm a fan of both. Not that I am Spurs or Real Madrid fan, but just the players I'm saying. Sahal Abdul, interesting. भैया वोट कुछ भी लो, लास्ट ओपिनियन अपना रख लो। हाँ वो भी फेयर है, लेकिन वो ये अगर 50% वो वोट से बात है तो कम ऑन, इसलिए यार हकीमी और बुस्केट्स को तो लेना ही था, वो इतने सारे वोट्स आए थे। अदर्स मे बी आई विल टेक दैट, लेकिन हाँ लेट्स सी अरे सीरियसली थोड़ा बोलो भाई। बाय द वे वोट्स कम आ रहे हैं, पीपल गेट इन योर वोट्स। हु डू यू थिंक इज एन ऑप्शन बिटवीन किमिक, बेलिंगहम, गावी एंड केसी? काफी कम वोट्स है और आई एम होपिंग पीपल आर लाइकिंग द स्ट्रीम। इफ दे आर, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया है। लेकिन यहाँ पर मैं शेयर स्टॉप करूंगा क्योंकि आई वुड लाइक टू एड्रेस द पीपल हियर। पीपल 5 मिनट्स लेफ्ट। क्रोएशिया 1, फ्रांस 1, क्या लग रहा है आपको? और अगेन लॉट ऑफ चेंजेस अभी हुए मैच में, मैच का पोजीशन क्विकली देख लेते हैं यहाँ पर, और मैं दिखाने वाला हूँ आपको स्क्रीन में जो मैच का चल रहा है अभी, ठीक है? व्हाइल आई कम बैक टिल आई गेट सम मोर वोट्स इन द सेंट्रल मिडफील्ड पोजीशन और फॉरवर्ड लाइन पे आने वाले 2 मिनट में। तो ये आप देखो, क्रोएशिया वर्सेस फ्रांस, क्रोएशिया विद अ चांस अगेन, लेकिन नहीं, फ्रांस
लॉट ऑफ देम डिफेंडिंग टुगेदर, इतने सारे चेंजेस हो गए. द फैक्ट इज क्रोएशिया अपना पूरा फॉरवर्ड लाइन चेंज कर ली. आप देखो पांचों लोग बाहर निकल गए और आ गए रेंज ऑफ फॉरवर्ड्स, ऑर्सिच, पैसलिच, क्रामरिच, व्लासिच और सुसिच. ठीक है, तीनों पांचों. और यहाँ पर ऑलमोस्ट गोल हो गया. माइक मैग्नियान भाई साहब, 1-1 का 2-1 हो जाता. अभी लास्ट मिनट्स में लग रहा है फ्रांस हगेगी लग रहा है. इज इट टाइम टू गेट ऑन बेंजेमा? इज इट टाइम टू गेट ऑन किंग्सली कोमन? और आई नो एम्बापे इज इंजर्ड फ्रॉम व्हाट आई हियर. जीरो टू ऑप्शन नहीं है, लेकिन हाँ दे हैव आल्सो मेड सम चेंजेस. आप देखो ग्रीजमैन आए हैं, कमारा आए हैं, क्लॉस है. मैंने कमारा मैं भूल गया, डेब्यू फॉर फ्रांस. सो कांग्रेचुलेशन टू बुबकार कमारा हु विल आल्सो मेक हिज डेब्यू फॉर एस्टन विला इन द कमिंग मंथ्स. लेकिन हाँ चुआमनी अगेन काफी बढ़िया परफॉर्मेंस मेरे लिए तो. वेरी वेरी इम्प्रेस्ड विद चुआमनी. एंड पीपल लेट मी नो मीनवाइल व्हाट डू यू थिंक इज हैपनिंग टू दिस टीम. यहाँ पर काउंटर अटैक फ्रांस का गोल होने वाला है लगता है ग्रीजमैन का. ग्रीजमैन ऑलमोस्ट गेटिंग देयर लेकिन नहीं, हक दिया लास्ट शॉट. भाई साहब क्रोएशिया मिडफील्ड गोलकीपर पैनिक मैन फॉर अ सेकंड. लेकिन लेट मी सी यार भाई, 20 वोट्स कर दीजिए जो भी वोट नहीं किया है, 20 वोट्स एंड आई विल स्टॉप. ठीक है. लेकिन लुक्स लाइक क्लियरली इट इज द विनर इज किमिक एज ऑफ नाउ. तो एज मच एज आई टोल्ड दैट किमिक होने चाहिए सीडीएम, आप लोग मेरा नाम रख दिए और गिव हिम मोर द वोट्स ऑन द राइट सेंट्रल मिडफील्ड पोजीशन. चलो तो किमिक को डाला हो अभी तक, लेकिन देखते हैं. आई जस्ट वोट फॉर वेट फॉर अ सिंगल मोर वोट. होपफुली पीपल कम इन एंड वोट. And this is what we are doing, people. Do not forget to like and subscribe, by the way. Croatia can win this match, Ankit. Talk MU says, well, they're looking like, but again, on the counter, France have it in them. Who knows that they'll get on Benzema for the last 2 minutes. Benzema क्यों नहीं आ रहा है वो, ये मतलब he wants total rest आज रात. Looks like it. लेकिन यहाँ लग रहा है, अरे भाई, what a chance, man. Rabiot had another chance. That should have been a goal. That should have been a goal. Rabiot got a cutback from the right wing, or he was on his heels behind. होना चाहिए था वो goal, absolutely. Lukaku better than Richarlison. I will support Vinny. Lukaku better than Richarlison on skills, on ability, yes, not on form. No team is complete without two goals, Shan Ali Khan and Sunny Bhasin. Okay, interesting. One question is Messi factor attracting players choose PSG over others and manager. वो great point है. किमिक को डाल दो. चलो किमिक को मैंने तो डाल दिया. बहुत वैरायटी भी उसके, किमिक बहुत डिफेंसिव नहीं हो गया. अरे अटैक में 3 अटैकर्स प्रॉपर डालेंगे, टेंशन नहीं है भाई. हमारे विंग बैक्स भी है, याद करिए हमारे फुल बैक्स भी काफी विंग बैक टाइप है होपफुली. तो यहाँ पर मैं शेयर करने वाला हूँ फिर से द 11 while Croatia are attacking in the last few minutes. भाई साहब ब्रिलियंट मैन. क्रोएशिया, यू हैव टू गिव इट टू देम भाई. दैट इज व्हाट आई लाइक अबाउट क्रोएशिया. किसी ने कमेंट किया था whom are you supporting tonight. मैं बोला था रियली लाइक द क्रोएशिया एनर्जी. आप देखो पांचों फॉरवर्ड लाइन के चेंज कर दिए, मतलब मिडफील्ड फॉरवर्ड पूरा चेंज कर दिया, फिर भी दे आर एबल टू अटैक इन अ बेटर मैनर. यू नो एट बेस्ट काउंटर कर रही है भाई फ्रांस. हाँ, यू कैन से दैट फ्रांस का बेसिकली यू डोंट हैव अ फर्स्ट टीम फ्रांस का, बट वी ऑल नो फ्रांस का सेकंड टीम इज एज गुड एज क्रोएशिया का फर्स्ट टीम, राइट? एंड दैट्स द रियलिटी ऑफ इट. और इसलिए मैं बोल रहा हूँ. और यहाँ पर मैं आज डालना भूल गया था, लेकिन चलो कोई नहीं, करते हैं. होपफुली वी विल गेट टू 250 लाइक्स. आई नो काफी एम्बिशियस है, बट दैट्स हाउ आई एम. पीपल. सबको पता है मेंडी, बुस्केट्स का थियो, कैसेमीरा होने वाला है. फ्रांस को देखो, इतना अच्छा स्क्वाड है, स्क्वाड डेप्थ है, फिर भी हग्गू गेम खेलते हैं. मे बी वही है, दे आर वेटिंग टू गेट टू देयर पीक इन द वर्ल्ड कप. But yes, I have put in Kimmich, people. I don't know कितने वोट्स आए हैं, by the way, और वोट्स नहीं है तो चलो people are bored of midfield looks like. तो फॉरवर्ड लाइन के लिए I don't think it requires any votes at all. Would you say that can we put both Lewandowski and Benzema? People, बोलिए आप, is there a way? 4-3-3 के ऑप्शन देखते हैं, क्या क्या ऑप्शन है. पता नहीं है. 4-3-2-1 I don't know. 4-3-2-1 can there be an option of playing both? मतलब अगेन लास्ट 15 महीनों में अब मेसी को डालोगे, कोपा अमेरिका जीते, बैलन डोर जीते, एंड ऑफ कोर्स फिनालिसिमा जीते हैं, बट पीएचजी के साथ क्या किया है. मतलब आई नो पीपल से कम ऑन, हाउ कैन Messi not be there? Let me know, people. Vinicius Junior, absolutely. Benzema and Messi. Okay.
बीशान गिरी बोल रहे हैं विनिशियस जूनियर, बेंजेमा और मेसी। मेसी ऑल टाइम में एब्सोल्युटली नो टू वेज अबाउट इट, लेकिन लास्ट 15 महीनों के फॉर्म में आर्ग्यूबली आप बोल सकते हो लेवेंडोव्स्की काइंड ऑफ डिजर्व्स मोर, बट ही इज नॉट अ विंगर। विनिशियस, बेंजेमा और एंकुकू, दिस इज अ ग्रेट शाउट, बट अगेन कंट्री के लिए क्या किया है एंकुकू ने, मेसी ने किया है। चलो विनिशियस जूनियर और बेंजेमा तो ऑब्वियसली ऑप्शन है वहां पर मैं आई वाज जस्ट प्लेइंग अराउंड लुक्स लाइक, लेकिन विनिशियस जूनियर एंड बेंजेमा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एसी मिलान क्या है, माइक मैग्नियन। रियल मैड्रिड क्या है, मेंडी। एक्स रियल मैड्रिड है हकीमी, बट यू नो व्हाट आई मीन। मेंडी रियल मैड्रिड क्या है, विनिशियस जूनियर, बेंजेमा, तीन आ गए रियल मैड्रिड को। तो रियल मैड्रिड के डन, रोड्रिगो नहीं आ सकते। वेराटी एंड ओके, पीएसजी के हकीमी भी है, वेराटी एंड हकीमी फ्रॉम पीएसजी। बार्सिलोना के बुस्केट्स, would you put a Ferran Torres जो खेले हैं प्रीमियर लीग में, ऑफ कोर्स हाउ कैन आई से दैट, लेकिन would you put a डेम्बेले लास्ट 6 महीनों के फॉर्म में, आई डोंट नो। हेलो 8744, एम्बापे नहीं आएगा क्या? यस, मैं एम्बापे को भूल गया, कैन यू बिलीव इट तेजस, थैंक यू मुझे याद दिलाने के लिए एम्बापे को भूल गया भाई मैं, मेसी इज टू ओवरकिल, बोरिंग हो जाएगा एवरी या मतलब आई नो एम्बापे होना चाहिए भाई, मैं एम्बापे को भूल गया, कैन यू बिलीव इट? और आई नो मैड्रिड फैंस वुड से नो, बट एम्बापे हैज कैरीड पीएसजी, और भाई पीएसजी से 3 प्लेयर्स है यहाँ, क्रोएशिया ऑलमोस्ट स्कोर्ड फ्रांस विद 2 बैक टू बैक लॉसेस होता भाई साहब, दैट शुड हैव बीन अ गोल एज वेल। व्हाट भाई, क्रोएशिया हैज सम यंग स्टॉलवर्ड्स भाई, they don't have Perisic of the likes only, they have some young wingers who are really good, I have to say, just like डेनमार्क के पास है ना। फ्रांस एंड पोर्चुगल को देखकर गुस्सा आता है, इतना अच्छा स्क्वाड है यार, कोई नहीं यार, टाइम आने पर करेंगे, लेट्स सी, मे बी लास्ट 4 मैच डेज ऑफ द नेशंस लीग दे विल वेक अप, एंड लास्ट से राउंड ऑफ 16 ऑफ द ग्रुप स्टेजेस के बाद में जो है वर्ल्ड कप के दे विल वेक अप, विराटी कम ऑन Euros 2020 has great performance, विराटी टॉप असिस्टेंट इन सीरी यार, नहीं यार विराटी वाज फार फ्रॉम इट, कम ऑन लेट्स बी ऑनेस्ट। आप 4-4 कर दो, मेसी, लेवेंडोव्स्की एंड विनी। 4-4 ऑप्शन भी है क्या इसमें? 4-4 ऑप्शन है नहीं, ऑप्शन नहीं है भाई। 4-4-2 4 देखते हैं, मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग आउट डिफरेंट ऑप्शंस पीपल, आई डोंट नो मैन, मतलब यहाँ ऑप्शन नहीं दिख रहा मुझे, प्रॉब्लम यही है ना, आई एम नॉट सीइंग ऑप्शन। तो यहाँ पर वी हैव टू गो टू 4-3-3 ओनली। हाँ, दिस इज नॉट अ बैड फॉर्मेशन, दिस इज नॉट अ बैड फॉर्मेशन। हाउ अबाउट दिस, मतलब कम ऑन, बाय द वे हो गया मैच, पूरा हो गया है, और हमारी टीम भी पूरी हो गई है। आप देखिए यहाँ पर किमिक के जगह, क्योंकि किमिक आई हैड शाउटेड द मोस्ट और ही हैज बीन इंजर्ड लॉट्स, इन द फ्री रोल जस्ट अहेड ऑफ द डिफेंसिव मिडफील्डर, लेट्स पुट इन मेसी। हाउ इज दिस टीम पीपल? लेकिन उससे पीएसजी से 4 हो जाएंगे तो वो चीटिंग होगी तो आई हैव टू बेसिकली रिमूव वेराटी एंड पुट इन किमिक, बिकॉज वेराटी के लिए मैंने वोटिंग नहीं ली थी। तो ये रहा, आप देखिए ये रहा आपका फाइनल टीम, और मैंने काफी फिक्सिंग किया है यहाँ पर, आई नो, लेकिन लेट्स बी ऑनेस्ट, एट द एंड ऑफ द डे इट्स फॉर मस्ती। एंड 15 महीने में मेसी ने क्लब चेंज किया, कोविड हो गया, वो भी फेयर इनफ, आई हैव पुट इन मेसी, एम्बापे इन राइट विंग, या एब्सोल्युटली, नेमार एट लेफ्ट विंग एंड विनिशियस एट राइट विंग। नेमार arguably, लेकिन अगेन आई एम काइंड ऑफ गॉन फॉर एम्बापे। खेलेगा no, should not be there, like he should be there, let's be honest, worried about his performance. Modric Madrid का क्लच एक्सपीरियंस क्रोएशिया में लेके आया है शायद, फेयर इनफ। why is Mbappe not fair please? भाई एम्बापे ने अच्छा किया है काफी परफॉर्मेंस, इफ यू सी इन फॉर पीएसजी he's been the main player। 3-2-2-3 3-2-2-3, ये क्या फॉर्मेशन खिला रहा हो देख लो, ये 4-2-3-1 है, 4-2-3-1, फेयर इनफ। तो 4-2-3-1 में आप देखो, और ये थोड़ा वाइड करा देते हैं, इसको थोड़ा वाइड भी कर सकते हैं, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट मी सी। 4-2-3-1 में हाँ ये है, चलो विनिशियस जूनियर राइट हो गया ऑटोमेटिकली इसमें। हाउ इज दैट पीपल? मुलर डाल दो यार, मुलर आई एम नॉट श्योर यार इफ ही इज हैविंग दैट लेवल ऑफ एक्सपीरियंस लास्ट 15 महीनों में। जेम्स रोड्रिगेज फॉर ऑल रायन डिस्ट्रॉइंग द कतारी लीग, लेकिन वही है, कैन यू कंपेयर दैट विद द टॉप 5 लीग्स? नो, पुट मुलर। कैसी ग्रैवेनबर्ग डबल पिवट कर दो,
Well, they have been brilliant, bhai. They have been brilliant. But again, it'll be unfair of me to not, put Kimmich in there. Because जब भी खेले, let's be honest, you would rather have a Kimmich in your team with his performance in the last 15 months also versus a Kessie or Gravenberg, जो Kessie especially Champions League में काफी हगे थे. So I don't see he had impressed as much compared to basically a Kimmich. और of course Busquets ने time and again prove किया है बार्सिलोना के लिए, he's a must. तो इसीलिए हमने डाला है. Only reason why Gravenberg is not there because again in the topmost league is not proven enough. Otherwise, I'm a fan. De Jong you could have said, maybe Verratti you could have said, but again PSG से बहुत players थे, Verratti को हटाना पड़ा because Hakimi was a clear winner in the right back position. और De Jong first 4 महीने काफी kind of under the radar थे. He didn't really improve, right? Absolutely, man. Too many chances missed. Mbappe, we Real Madrid fans put Muller there. भाई Muller काफी लोग बोल रहे हैं भाई, लेकिन किसको हटाए? Do you want me to remove Messi and put Muller? Come on, that's not going to happen. You know that very well. Ankit bhai, Muller, Verratti, Messi, Kimmich. Messi in all-time 11 is so boring at this point. It's not an all-time 11. It's basically the last 15 months 11 have not played in the Premier League, and one would like to have seen him in the Premier League. And I've seen a lot of Messi fans also in the chat. और यार मैं देख रहा हूँ बहुत लोग हैं यहाँ पर. People, what we have picked यहाँ पर आप देखिए, जो भी ज्वाइन किया सब लोग लाइक कर दीजिए, भूलना मत. Let's get to 150 likes. 250 टारगेट है, लेकिन 150 लाइक्स कर दो. और 3.9 के अपना है, 3.9 लियो मैं दे दो. मेरे और स्पेलिंग doesn't kind of get together, लेकिन हाँ 3.9k is the subscribe target. लेकिन do consider to like, subscribe and share because we are doing something very interesting as we saw this 1-all draw and we'll look at what has happened in this group. लेकिन I would say that France need to play their first team in the next game altogether. और मैं बोल रहा हूँ France will still top this group. Coming back to this topic, best current 11 not to play in EPL this century. ये है based on current form जो नहीं खेली है EPL में ever. Do you agree or not? People who have joined in, सब अपना डालिए comments. बहुत ही interesting रहेगा. Cooler from Sisu saying that penalty. यहाँ it was a very soft penalty, लेकिन again technically आप बोल सकते हो there was a touch. And आज के दिन में players go down simply put. लेकिन bad from Klaus as well ना, मतलब it was unnecessary really. मैनेजर भी चूज कर लो, will be interesting. हाँ, बेस्ट मैनेजर not to have ever managed the Premier League. ये कमेंट्स में डालिए अभी, बहुत ही अच्छा है. Let's put in that. बेस्ट मैनेजर not to have ever played in the Premier League. बोलिए सब लोग. ये रहा आपका टीम. इस टीम को कौन कैप्टन करेगा भाई? ऑब्वियसली मेसी कैप्टन करेंगे और बेंजेमा वाइस कैप्टन होंगे. नहीं बोनुची has to be the captain. What do you say? Bonucci the captain and maybe Messi the vice captain or Benzema, anyone could take. But आप बोले कौन होगा कैप्टन, कौन होगा वाइस कैप्टन और कौन होगा मैनेजर? I'll leave it to you guys. ठीक है? I am waiting for the comments and let me know who was the man of the match of tonight's match as well. Croatia versus France. क्या लगता है for you? Should it go to the Croatian forward जिन्होंने किया है goal score? Or should it go to obviously Incl who played most of the minutes or Yedder जिन्होंने दिया assist or just Rabiot जिन्होंने score किया है goal? Let me know. Kramaric probably getting that goal, important penalty, लेकिन I think it was a penalty at the end of the day. तो मैं बोलूँगा यार आज के man of the match in a strange way I have to say it was a very underwhelming match. Overall मैं बोलूँगा मेरे लिए तो it has to be one of the defenders. Wasn't Kimpembe good? Kimpembe ने काफी अच्छे saves किए थे. I think I'll give it to Kimpembe. I don't know about you guys. I'll probably give it to Kimpembe. हाँ, अगर Mike Maignan would have saved the penalty, I would have given to Mike Maignan. Otherwise, I'll give it to Kimpembe. Or coming back to that team, best current 11 not to play in EPL this century. Who is the captain? Who is the coach for you all? As you like the stream, hopefully देखते हैं. यहाँ पर मैनेजर भी चूज कर लो. डेनमार्क स्कोर ओके, वो मैच लेट शुरू हुआ बट वहां पर हॉयबर्ग स्कोर्स. भाई साहब थैंक यू फॉर शेयरिंग. हॉयबर्ग स्कोर्स और हमने लाइनअप डिस्कस किया था क्विकली, लेकिन हाँ हॉयबर्ग स्कोर्स पीपल चेक इट आउट. ये नेशंस लीग इज समथिंग एल्स मैन. हॉयबर्ग, यस, पियर एमिल हॉयबर्ग स्कोर्स 28 मिनट में. वहां पर 29 मिनट्स में स्कोर है 1-0 और अवे टीम अगेन येट अनदर टाइम डूइंग वेल. लास्ट मिस फ्रॉम क्रोएशिया. Zidane is a great shout. लेकिन लास्ट 15 महीनों में उन्होंने मैनेज किया है? नॉट रियली. दैट्स द ओनली थिंग. बुस्केट्स की जगह वेराटी प्रणाली कैसी डाल दो. बुस्केट्स ने कितना ही किया है भाई, वो कंसिस्टेंटली था मैच मानव. मैं बोलता हूँ बारसा की टीम में, और बारसा की हम क्या एसोसिएट करते हैं? मिडफील्ड. तो आई वुड से इट्स फेयर टू पिक वन बारसा मिडफील्डर. मेरा तो वो लॉजिक था.
एंड काफी वोट्स आए थे भाई, वोट्स के अगेंस्ट में नहीं जा सकते, 50% वोट आए थे, इतने सारे आए थे। और ज्यादा कंसिस्टेंट रहे बारसा में कंपेयर टू डियोंग। अगर आप 15 महीने देखो ना, तो दैट्स व्हाई आई पुट बुस्केट्स, और कोई रीजन नहीं है। प्लस एक्चुअली पीपल फॉरगेट, आई नो बुस्केट्स डिड नॉट हैव अ ग्रेट यूरोज, बट स्पेन रीच्ड टू सम लेवल इन द यूरोज एज वेल, राइट? तो इसलिए मैं बुस्केट्स को पिक किया हूं ओवर मे बी अ केसी, जो यूसीएल में कुड हैव डन बेटर, ही हैड चांसेस। टोनाली नॉट एज सो कंसिस्टेंट इन द लीग। जिडान, सब लोग जिडान बोल रहे हैं। हैंसी फ्लिक या हैंसी फ्लिक प्रोबेबली। लुइस एनरिके होगा इस टीम का कोच। जिडान, क्रिस्टोफर गाल्टियर, पियोली, स्टेफानो पियोली, व्हाई नॉट स्टेफानो पियोली। स्पलेटी इज नॉट अ बैड ऑप्शन एट ऑल। सो स्पलेटी इज अ वन गाय जो बहुत अंडररेटेड है फॉर व्हाटएवर रीजन ना, इतने सारे साल साल के लिए, लेकिन नापोली के लिए has he done that good? I'm not sure. कैप्टन इज किमिक, बाय द वे मैंने किमिक को लास्ट में डाला था क्या, मैं खुद ही भूल गया। हाँ, किमिक थे लास्ट में, कैप्टन किमिक। चलो कैप्टन किमिक। आई थॉट बोनुची वाज अ नेचुरल कैप्टन, बट अगेन किमिक इज अ नेचुरल कैप्टन एज वेल। हैंसी फ्लिक, लुइस एनरिके, स्टेफानो पियोली। पोल कर दो, हम लोग ऑप्शन देते हैं दो। जिडान एंड लुइस एनरिको तो ऑलरेडी है, चलो तो पोल कर देते हैं टू एंड द स्ट्रीम। लेट्स एंड द स्ट्रीम विद अ पोल पीपल। हु हैज बीन द बेस्ट मैनेजर in the last 15 months not to have ever managed in EPL? Yeah, that's the question. Options है जिडान, पियोली, लुइस एनरिके, और कौन? हैंसी फ्लिक डाल दे। हैंसी फ्लिक डाल देते, चलो फ्लिक। ठीक है, कैप्टन अपना हो गया किमिक। और एक्चुअली 4 कैप्टन के भी लॉट ऑफ ऑप्शन थे, तो वहां भी मैंने पोल डालना है। मेसी है, बेंजिमा है, किमिक है और बोनुची है। कैप्टन भी 4 ऑप्शन है। देखते हैं। वैन ब्रांकोस्ट ऑफ वैन ब्रांकोस्ट ऑफ रेंजर्स, व्हाट अ लेजेंड कॉमन। Simeone Inzaghi did a good job, but again he didn't win the league, so that's why I'm not going with him. Pioli deserves it. I will choose Hansi Flick over Zidane and Luis Enrique because Hansi Flick tactics are simple but effective and very aggressive, gegen pressing, and with this he won UCL. Captain Bonucci need a vocal leader for the team of stars. Plus he won the major competition Euros. Igor's team match. Wow, team match, not a bad option, man. Indian coach, come on. Diego Simeone, absolutely नहीं. Good pun intended. लेकिन यहाँ पर स्ट्रीम एंड करने वाले हैं थोड़ी देर में, और होपफुली पियोली हैज डन द इम्पॉसिबल विद मिलान। फेयर इनफ, पियोली, आई वाज एक्सपेक्टिंग पियोली विल गेट अ लॉट ऑफ वोट्स। देखते हैं कौन है आपके, और मैं कैप्टन का भी डालने वाला हूँ टू एंड द स्ट्रीम। और बाय द वे 150 लाइक्स भी कर दीजिए यार, जैसे आप कर रहे हो, लाइक करना मत भूलना, बिकॉज वी रियली नीड दैट टू बी डन। लेकिन हाँ, स्टेफानो पियोली, ही हैज डन अ मैडनेस विद मिलान, रिमेंबर। वो मिलान साइड वो हक दी थी लिटरली चैंपियंस लीग में, बट आफ्टर दैट ही रियली रोज अप and did what was required. Yes, I am sitting in AC Milan coach, लेकिन at the same time आप बोलोगे Hansi Flick काफी underrated है। Hansi Flick did not get so much opportunity in the last 15 महीनों के लिए because of managing the national team, लेकिन with Bayern previously was superb. Zidane, one of the most underrated managers in the last decade. मतलब clearly the guy, I don't know, whatever for whatever reason took so much flack, लेकिन मेरे ख्याल से Zidane expected a lot as well. So there is a lot of question mark. एनरिके का आई हैव माय ओन क्वेश्चन मार्क, बट अगेन बिकॉज आप लोग ने बोला है, मैं डाल रहा हूँ एनरिके को, बिकॉज विद दैट स्पेन स्क्वाड इज एबल टू अचीव इन द यूरोज एज वेल अ लॉट। तो आई कैन स्टिल अंडरस्टैंड व्हाट रीजन यू आर सेइंग एनरिके। लेकिन भाई साहब, हैंसी फ्लिक को मिल रहे हैं काफी सारे वोट्स, मैं देख रहा हूँ ज्यादा वोट्स आए हैंसी फ्लिक को। इंटरेस्टिंग। और लेट मी नो हु वाज द मैन ऑफ द मैच। मेरे लिए आज का मैन ऑफ द मैच, अगेन टैक्टिकली इट वाज अ गेम जहां पर कोचेस वर जस्ट चेंजिंग। They wanted to go for the win, especially Croatia in the end, लेकिन they weren't able to. 1-1 है, और by the time आप कर रहे हैं, let me actually put in the second poll because यहाँ पर करीबन आ गए हैं 25 वोट्स। तो यहाँ पर by the way लाइक्स नहीं बढ़ रहे, तो लाइक्स बढ़ जाइए जाने से पहले। लेकिन हाँ, hopefully Simeone underrated है, Cooler from CCU is saying fair enough, लेकिन let me see who's the captain, who should be the captain among these. And that is of course options कौन थे? किमिक, बोनुची,
बेंजेमा एंड द गोट मेसी। ठीक है, तो ये है आपके ऑप्शंस। ठीक है, आपके कोच तो किमिक हैज बीन टेकन एज अ कोच बिकॉज करीबन 40% वोट्स आए। ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। और मीनवाइल टिल द टाइम यू वोट, नया पोल डाला है मैंने अबाउट कैप्टन, सो प्लीज एवरीवन वाचिंग डू पुट इन योर वोट्स फॉर द कैप्टन ऑफ दिस टीम। विच टीम? मैं स्क्रीन पे डालने वाला हूँ एक टीम, और वो है टॉपिक जो हमने कवर किया फॉर पीपल हु जॉइन लेट, राइट? दिस इज व्हाट वी डिड। ठीक है, बेस्ट करंट 11 नॉट टू प्ले इन ईपीएल इन सेंचुरी। आई पुट इन अ पोल हु इज द कैप्टन। What is the future for Pulisic? I had high hopes from him. It has been up and down. I think his future is good. He's too young यार, अभी भी 22-23 साल का है. He is captaining his national team, lot of responsibility. Yes, he's not a great finisher, but I think अगर उसको confidence मिले ना, it's about confidence. He has to take people on, be a bit more direct, or shooting he has to practice a little bit more. I think it'll be there. You know, left wing में ज़्यादा खिलाओ, ज़्यादा consistent खिलाओ. Don't play him as a right wing back to kill. मैं तो इतना ही बोलूँगा, और I don't see him going to Liverpool. मुझे दिख रहा है कि he'll stay in Chelsea. I really feel that with Boli coming in, absolutely. Gnabry definitely great shout, लेकिन वही है, Gnabry was an Arsenal player. To some extent, I have my doubts about that. You know, same with Kane. I know brilliant players, दोनों, लेकिन I'm just putting it out there. Haaland fit हो सकता है as a striker, why not? He can absolutely fit. Like, I think it comes down to his mentality in terms of, you know, just being the very best week in week out in the Premier League. वो देखना पड़ेगा. And the Pep Guardiola, is he open to listen to Pep? What Pep wants? ये फॉर्मेशन हैंसी फ्लिक की है, सो ही इज परफेक्ट दिस फॉर्मेशन. फेयर इनफ. डी मरिया टू एफसी बार्सिलोना, योर थॉट्स? हाँ, मैंने बात किया था, आई थिंक इट वाज एन राघव टीवी और जी भाई थे वहां पर. वी हैड डिस्कस, मैं चैट में था और हम थे डिस्कशन में. तो what I was seeing as Di Maria is obviously a good option considering the fact कि वो experience है जो forward line में missing है for Barca. That's what they want. But ex Real Madrid player, so they rather go with a Rafinha paying a little bit more money. अगर उनका deal होता है. When will Curse of number 9 finish at Chelsea? As soon as Ankit starts playing for Chelsea. Just joking. The fact is, bhai, it is not a curse, but you feel like a curse because it's been so long. We had a Hasselbank in the past. We had basically a Drogba. We're not number 9 in terms of the short number, especially Drogba. Like, you know what I mean. You know, we've had people. Tammy was decent. Like, he wasn't like great. आएगा यार, टाइम आएगा, अपना टाइम भी आएगा. पीके, ओ माय गॉड. चेल्सी ट्रांसफर न्यूज, मुकेश ट्रांसफर स्ट्रीम करेंगे भाई जल्दी. इतना ज्यादा न्यूज नहीं है आज, इसलिए आई वाज डिस्कसिंग समथिंग एल्स. बट ऑफ कोर्स वी आर होपिंग टू लैंड इन डेम्बेले, टू लैंड इन कुंडे, टू लैंड इन कुलीबाली. These are 3 people जो मुझे लगता है quite doable है अगर Chelsea are really going for them. ठीक है, these are 3 doable people, doable signings. Or apart from that, Levi Colwill should come back, Gallagher should come back, Broha should come back. I know Broha possibly talks चल रहे with other clubs, but we should convince him no matter what, considering the Lukaku situation. Or Emerson might come back. So as I'm seeing, technically 4 या 5 लोन से वापस आएंगे. Gilmore can be a backup DM. तो 5 coming back from loan, 4 new signings. That's what I'm looking at, Mukesh. Yeah, absolutely. But he got the highest number of votes as well. Don't worry about that. Ankit, where would you advise Jesus to go, Arsenal or Spurs? To be very honest about it, I can see him not being, having so many minutes in Spurs. He'll have more minutes in Arsenal. Lekin someone shouted Real Madrid. Why not, man? Real Madrid. At the end of the day, come on. Gabriel Jesus is a Brazilian. For them, we know what Real Madrid means. So maybe Real Madrid, I would say. Why not? If Gnabry is not going. अंकित भाई, चेल्सी का सेंटर बैक्स कौन होने चाहिए नेक्स्ट सीजन? I just told that it should be Koulibaly and Koundé. हाँ, ideally I would have wanted Pau Torres, लेकिन the fact is बहुत costly होगा वो और Koundé putting together, right? Okay. Bring Demba back, the curse will go. Barca to financially इतना खराब हो गई. Don't worry यार, it's about time यार. It's just the beginning of the transfer window. You will get a lot of options. अभी आएंगे भाई, अभी तो शुरू है. Koundé, Koulibaly don't play left center back. Koulibaly plays. Koulibaly has played in the past. He has played. I know इतना ज़्यादा pace नहीं है as compared to what he was 3, 4, 5 years ago. लेकिन यार फिर भी Koulibaly has it यार. He will definitely play left center back. वो left footed नहीं है, लेकिन खेलते हैं. Gabriel Jesus fits good in which team? Arsenal. Like I said, Real Madrid is the best option. I personally feel that. और Real Madrid को एक बैकअप स्ट्राइकर भी चाहिए, बैकअप विंगर और अदर स्टार्टिंग भी चाहिए, तो why not? He's a good option.
Havertz will be the well. आपने कल का वॉच अलॉन्ग मिस किया, लेजेंडरी डे था कल. कल का कौन सा वॉच अलॉन्ग मिस किया भाई? तेजस आपने मिस किया है. कौन सा यार? आप दोनों चैनल में हमारे सब्सक्राइब नहीं हो क्या? ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस पे हमने किया था वॉच अलॉन्ग. चेक इट आउट यार, लिंक इज ऑलवेज इन डिस्क्रिप्शन बिलो. वी आर ओवर 3K सब्सक्राइबर्स वहां पर भी. इट्स अ डिफरेंट चैनल, इट इज द सेम लोगो विद अ डिफरेंट लेआउट. ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस, वहां पर भी ज्यादा फुटबॉल की बातें होती है, लेकिन वहां पर क्रिकेट सीजन भी हम कवर करना चाहते हैं बहुत बहुत. और इन द फ्यूचर मे बी ओलंपिक्स और बाकी स्पोर्ट्स भी करेंगे यार, व्हाई नॉट. Who will play left centre back? I just said that. Ankit Bhai, do you know why Hansi Flick left Bayern? Thanks to Bayern. Oh, Bayern. If I'm not wrong, Bayern, it was just about him wanting to manage the national team. That was what I heard at the time. Like, and I think he was super with Bayern. I think Bayern have had some great managers, super managers. Bhai. Robin played under some great managers at Bayern. I remember that. Leva has met the Bayern. If Barca can't sign him, I think Chelsea can buy him for low cost. लेकिन प्रॉब्लम है, he wants to go only to Barca for whatever reason. तो मुझे लगता है वो होने वाला है. Koulibaly is a monster. I saw him destroying Madrid, Mo Salah and AFCON. Not destroying, but I know what you mean. Madrid are looking at Gabriel Jesus at right wing option. He can play at striker too. I was seeing tweets of Madridista. They were saying, okay, fair enough. अंकित लाइव एवरीडे स्ट्रीम्स एंड वॉच अलोंग. एग्जैक्टली, हमारे दो चैनल्स है, ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस और ऑलमाइटी ब्लूज एफसी. डू नॉट फॉरगेट. मैंने ही मिस कर दिया भैया, भाई जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन मत बोलिए, इसलिए आपने मिस किया है तो हिट द बेल नोटिफिकेशन आइकॉन फॉर ऑल नोटिफिकेशंस. Great stream. Thank you, Talk and me, bro. We'll catch up soon. EDM, big up. Firstly, do consider liking the stream, subscribing to Almighty Blues FC, to Almighty Sports Plus, which is the second channel where you'll find a lot of content coming up as well. And it's already there. All the links are in the description below. The first link, first line of the description has them tagged. But of course, check out Football versus Cancer. This is Talk MU who runs the channel. Cancer, as in a channel for fighting against cancer via football. So let's support Talk MU and his channel. It's called Football versus Cancer. I have tagged that as well in the first few lines of the description. मिलेगा आपको सब लोग को. Please go and subscribe to all the three channels, right? अगर आपने नहीं किया है. Any tips for starting a YouTube channel related to sports? Just speak your mind. Speak your mind and don't do जो बवाल जो मैंने किया था last month. But apart from that, it's good, man. Don't worry. As in, DM me if you would like to be, touching base, we can. Do you think Nagelsmann fits at PSG boss? No. I think if it's at Bayern boss, time लगेगा. Man management could be better. Of course, he needs to, settle the team more. Injuries भी थे. Alphonso Davies, his main wing back, left back was out for a long time. We have to understand that. Well, Cruyff, man, Cruyff. For me, I am biased. हैंसी का बायन या थोड़ा फाइट हुआ था. अच्छा, बायन बीच में छोड़ दिया और उसने उसके बाद नेशनल टीम का कोच. लेकिन आई थिंक ही आल्सो वेंट ऑन रिकॉर्ड सेइंग दैट ही वांटेड टू मैनेज द नेशनल टीम. मैंने शायद पढ़ा था कोविड के दौरान. एंड दैट्स व्हाट इट वाज. व्हाट अबाउट गुड इवनिंग टू पीएसजी? दैट इज अ गुड शाउट. गुड इवनिंग यार, व्हाई नॉट, राइट? दे वांट टू विन इन यूरोप. गेट गुड इवनिंग भाई, गेट एमरी. इस बार T20 वर्ल्ड कप कवर करना एब्सोल्युटली भाई. उससे पहले साउथ अफ्रीका सीरीज थोड़ा बहुत करेंगे वॉच अलोंग्स या रिव्यूज एब्सोल्युटली. शाई बॉय इन द हाउस, थैंक यू. होपफुली यू हैव लाइक द स्ट्रीम एंड लेट मी क्विकली चेक कितनों ने यार कम ऑन और लाइक कर दीजिए भाई. लाइक्स, let's just like the stream before you end and take the poll. There are 23 votes. I am choosing who's the captain among these. Highest number of votes has come to Lionel Messi. Lionel Messi was not even in the team initially, has been the captain of the team because winning Copa America, and of course Bonucci winning Euros wins the vice captain. So I am ending the poll here. लेकिन hopefully आप लोगों को अच्छा लगा. Yes, man of the match का shout दो तो मैं तो वापस देना चाहूंगा to Kimpembe. Yes, not a great defender, but आज he saved Croatia from scoring many goals, rather France from conceding many goals. ठीक है, तो आप देखिए ये वेबसाइट. To end the stream quickly, अगर रिव्यू करना चाहो तो this is what it is. They are rating Rabiot because ये वेबसाइट है football.com, very great. लेकिन they put in जो भी गोल स्कोर करता है उसको सबसे हाईएस्ट रेटिंग मिल जाती है. ऐसे थोड़ी होता है भाई, आप FPL थोड़ी खेल रहे हो. ठीक है, तो बेसिकली यू गिव. Chomini was very good until he was there, but वही है, वो इतना लंबा खेली नहीं है. That's why I'm giving for Kimpembe, जो स्किपर भी थे आज, तो I have to give to Kimpembe. That's my shout. Again, let me know how was Genduzi's performance, how was Boubacar Kamara's performance after coming on. Jonathan Claude जिन्होंने पेनल्टी दिया, unfortunately linked to Chelsea, I believe, लॉन्स के प्लेयर है. But again,
It'll be interesting. What do Croatia do, because Croatia have Perisic coming back. They have some firepower coming back. So Croatia looking good. World Cup final repeat. It's a draw match tonight. And what does it mean for the group of the Nations League? League A का group 1 में क्या हो रहा है? By the way, that's going to be really really interesting. But for me, clearly, I am still seeing that France are having the firepower. फ्रांस के पास है, मतलब नेक्स्ट 4 मैच डेज में इफ दे वांट दे कैन गेट इन जिरू एज एन ऑप्शन. They can get in so many people. भाई पॉगबा इज नॉट बीन इन द फ्रांस स्क्वाड राइट रिसेंटली. तो आप देखो यहाँ पर नेशंस लीग ए का हम देख ही लेते हैं क्या है सीन. तो नेशंस लीग ए का अभी एज थिंग्स स्टैंड, ओके, सो ऑस्ट्रिया इज ऑन टॉप, डेनमार्क इज सेकंड, बिकॉज हाफ टाइम में दूसरे मैच में ऑस्ट्रिया इज लूजिंग 1-0 टू डेनमार्क. दैट्स व्हाई इट इज दैट वे. अदरवाइज इट वुड बी फाइन. सो वहां पर भी आपके कमेंट्स डाल दीजिए, हु डू यू थिंक इज गोइंग टू विन दैट मैच. ऑस्ट्रिया वर्सेस डेनमार्क विद हॉयबjerg स्कोरिंग द गोल. हाफ टाइम हुआ है और हाफ टाइम में मैं एंड करने वाला हूं, क्योंकि यहाँ पर क्विकली मैं एज थिंग्स स्टैंड का टेबल दिखा रहा हूँ. ग्रुप 1 में ऑस्ट्रिया फर्स्ट, डेनमार्क सेकंड, फ्रांस थर्ड, क्रोएशिया फोर्थ. तो वर्ल्ड कप फाइनलिस्ट थर्ड एंड फोर्थ इन नेशंस लीग ए ग्रुप 1. लेकिन 4 मैच डेज अभी बाकी है. कम ऑन, फ्रांस हैव प्लेड डेनमार्क एंड क्रोएशिया, 2 टफ मैचेस खेल लिए उन्होंने. तो आई फील फ्रांस विल कम अप. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. फ्रांस होगी फर्स्ट, डेनमार्क विल रिमेन सेकंड. दैट्स माय कॉल. आप बोलिए आज रात का गेम ऑस्ट्रिया डेनमार्क. आई एम सीइंग डेनमार्क विनिंग इट. एब्सोल्युटली. That's what I'm changing my prediction, like always try and cheat a little bit, just for fun. How good is Niko Kovac? He's a free agent now. नहीं, Niko Kovac did badly at Bayern. Tuchel back to PSG. नहीं, Unai Emery is an ex-PSG manager. वैसे remember 6-1. Oh yes, I cannot forget that. Good one. But you know what? Things have changed now. You never know. Modric or KDB? Yeah, legends, man. Both of them, I think they've already reached the legend status for the respective clubs. If I am picking a team, I think Modric and KDB will be the best. दोनों ही kind of work brilliantly together, but I have to say KDB, man. KDB, I think किसी ने बोला है KDB deserves a Ballon d'Or, लेकिन उसको मिलने नहीं वाला, because you know how forward get it. Like Modric को मिला है Ballon d'Or, by the way. Watch along for Austria Denmark. नहीं भाई, second half अभी पूरा बाकी है. रात के 2:30 बजे भी पास हो गया है, so I'll not do that. But big up to you all, and we'll be back tomorrow. Of course, technically today. Tonight we are back. No, tomorrow है ना. Tomorrow 12 बजे, sharp 12 बजे Indian Standard Time. We will have Fateh in the house. Yes, because there's a big game, Germany against England. बहुत ही historic game है Germany England. We'll be covering that as well, and we'll be talking a little bit more about the World Cup hopefully. Half time Austria Denmark. Ankit भाई मॉड बना दो. ट्विलर फ्रॉम सीसीयू. चलो बना देते हैं आपको भाई. यार थोड़े और चेल्सी फैंस को भी ला दीजिए यार आप लोग. थोड़े चेल्सी फैंस भी चाहिए मॉड. नहीं तो लोग बोलेंगे यार तो चेल्सी फैन सच में है क्या, 22 साल से फॉलो कर रहा हूँ ऐसी चेल्सी को. या मिलान फैन ला दो. लेकिन हाँ, ट्विलर फ्रॉम सीसीयू, थैंक यू. आई मेड योर मॉड, लेकिन रेगुलरली आना भाई, और try and kind of support the team and support the stream as much as you can. Thank you, bhai, again. Denmark will win. Schmeichel is in form. Fair enough. Lampard, Gerrard scores, settle the debate. आज के लिए तो नहीं, but I'll come back to that. I'm starting that. Thank you, everyone. मजा आया. I am hoping that हम 150 likes कर दें by the time मैं उठूं सुबह. लेकिन काफी अच्छा लगा. बढ़िया टीम हमने सेलेक्ट किया. बेस्ट 11 नॉट टू प्ले इन द प्रीमियर लीग एटलीस्ट इन रीसेंट टाइम्स. हम ऑल टाइम भी करने वाले हैं वेरी सून. एंड हाँ, ये एब्सोल्युटली, और भी रहना भैया, और डू हेल्प सपोर्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम. एंड ऑफ कोर्स बिग अप टू यू ऑल, बिग अप टू ऑल द मॉड्स, बिग अप जो भी देख रहा है एब्सोल्युटली. और मुकेश, मैंने बता दिया ऑलरेडी, 4 people will sign, 5 people will get back from loan. बट डिटेल में हम ट्रांसफर स्ट्रीम भी करते हैं. चेक आउट अ वीकली ट्रांसफर स्ट्रीम हमने किया था ऑन ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस एज वेल एज ऑलमाइटी ब्लूज एफसी. टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर. और नेक्स्ट टाइम आज शाम को आने वाला है. चेक आउट अ पोस्टिंग्स ऑन द कम्युनिटी पेज ऑफ बोथ द चैनल्स एज वेल एज on Instagram as well as on Twitter. Almighty Blues FC, a fan channel for all to see. Take care.